etc., which I am sure will help us to crack any interview in the future and will help us to have a great personality. The session came to an end with the laughing therapy and kind words of Dr. Harblas Hira sir. Thank you. Thank you very much, Anirudh. Our today's chief guest and keynote speaker is Dr. S.K. Tomar. I request Dr. Neena Seth Pachni ma'am to introduce him formally. Over to Neena ma'am. Good morning, all. Today is the third day of Punjab University Youth Welfare organized youth training camp come workshop, and it is based on the theme inspire, enable, and engage. And today's sub-theme is youthful recitation. So I welcome you all on this day. On behalf of Director Youth Welfare, Dr. Nirmal Jora ji, on behalf of all the organizing team and students, I welcome today's chief guest, Dr. S.K. Tomar ji, and our resource person of the day, Dr. Mayank Anand ji. So dear students, Dr. Mayank Anand ji is going to speak on topic cross-cultural competence. He is alumnus of Punjab University and widely traveled personality and proficient in Hindi, English, Punjabi, French, and Spanish. We welcome you, sir. And today's chief guest is Dean Student Welfare, Punjab University, most respected Dr. S.K. Tomar ji. He is professor of mathematics, PhD in mathematics from Kurukshetra University, MPhil, MSc also from Kurukshetra University, and has a total teaching and research experience of more than 3 decades. His area of research interest is solid and fluid mechanics, numerical methods, and has more than 112 research publications in Journal of International Journal of Repute, and has delivered more than 120 extension lectures. He has a wide administrative experience, a visionary person, worked as a chairperson, Department of Applied Mathematics, Guru Jambeshwar University, Hisar, worked as a warden at Punjab University Hostel, chairperson, Department of Mathematics, and coordinator of UGC CAS program of Department of Mathematics. At present, he is also serving as honorary director of UGC HRDC Punjab University Chandigarh from July 2019 till date. And today we have invited him because he is also serving as Dean Student Welfare, Punjab University Chandigarh. His biodata is about 15-page long and long list of accomplishments he has. And also want to add that he is a widely traveled personality for academics purpose. He has visited Switzerland, UK, Germany, Canada, Hungary, China, Spain, etc. And he is fellow of prestigious National Academy of Science, member of International Academy of Physical Sciences, and also served as Vice President of Madras India Regional Chapter. सॉरी सर अगर मैंने आपके बायोडाटा में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ दी हो, क्योंकि ये बहुत लंबा है और बच्चों के लिए हमने आपको इनवाइट किया है ताकि आप उससे उनको मोटिवेट करें. एज ए कन्वीनर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के कैंप यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जब से इंसेप्शन हुई है इस डिपार्टमेंट की, और ज्यादातर ये प्रोग्राम ऑफलाइन में होते हैं, पर लास्ट ईयर और इस साल ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है. इस साल ये 10 डेज का कैंप है जिसका थीम मैं आपको बता चुकी हूँ, IEE के अंडर ये आ रहा है. यहाँ पे 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने
रजिस्टर किया है, पर 350 एनरोलमेंट में आए हैं और एट प्रेजेंट जो हैं वो ज्वाइन कर पा रहे हैं। आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं उसमें इंटरनेट इशू बहुत बार आ जाते हैं। तो ये सब इन सब स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे टीचर मेंटर्स हैं, बहुत ही सीजन्ड टीचर मेंटर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं और पहले भी उन्होंने बहुत से कैंप लगाए हुए हैं। और इस कैंप में हमारा जो पर्पस है वो यूथ लीडर क्रिएट करना है, द लीडर filled with all the Indian values, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साइको सोशल गेम्स, हर तरह की हम उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम उनको टीम में वर्क करना सिखाएंगे। बहुत मुश्किल होता है वर्चुअली टीम में वर्क करना। सो सर, ओवर टू यू, and to kindly share your word of wisdom with the students, Dr. S.K. Tomar sir. Thank you, ma'am. Most respected Dr. Neena Seth, Dr. Nirmal Jawda, Director, Department of Youth Welfare, Punjab University, Chandigarh, Dr. Monita Man, Dr. Amanpreet Kang, Chief Guest, Speaker of this session, Dr. Mayank, Anand, Dr. Rupinder, and dear students. I'm very happy to see all of you on this virtual platform, and I'm fortunate enough that I have been associated with this program. Although I can speak Hindi, Punjabi, and English, but I feel that it would be better to communicate if I speak in Hindi or in a mixed language. सर, हिंदुस्तानी में बात कीजिए। Yes, sir. तो मैं हिंदुस्तानी में बात करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आप सबसे मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिलके बहुत खुशी हो रही है। और मेरे दिमाग में एक बात सबसे पहले आई है, उसको जरा 2-3 लाइनें हैं, समझने की कोशिश कीजिए। और I'll show that this step of Professor Nirmal Jawda is how much of importance. See, somebody asked me कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। तो इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? तो your mind goes here and there. Is it agriculture development? Is it industrial development? Is it scientific development? Or is it something else? But the answer today is, it is the youth which is the strength of India. Next question goes कि भाई यूथ की स्ट्रेंथ क्या है? अब यूथ की स्ट्रेंथ क्या है? कोई उनकी बॉडी पावर है, या उनकी ब्यूटी है, क्या है? तो then the answer comes, it is the young mind which is the strength of India. Now, if you want to make this India a superpower, then the need of ours is to train the young minds. And hence, I'm very happy that this program named Youth Training Camp. So this includes that you are training the youth minds, and therefore it is the most appropriate and the most thoughtful
topic given and the program carried out by Dr. Nirmal Joda, and hence he deserves all kind of appreciation, all kind of applaud, all kind of thanks. So that is very, very important in this today's scenario, as we are passing through a very difficult time, which is कोरोना पेंडेमिक। तो इस ऐसे मुश्किल समय में भी उन्होंने इस बड़ी चीज को पकड़ के और यूथ ट्रेनिंग कैंप को ऑर्गेनाइज किया। तो मैं कहता हूं कि उनकी इस सोच के लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि टॉपिक एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट तरीके से एप्रोप्रिएट जगह से आया है, तो इसलिए वो हर तरीके के साथ में डॉक्टर नीना सेठ पजनी, which is a very good motivational speaker as well, running a very, very good leading institute. And you might have seen during the last few days कि वो कितना प्यार करती हैं और कितने अच्छे तरीके से बोलती हैं। तो ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन है यूथ के लिए, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है आज के यूथ के लिए। तो इन दोनों की टीम इतना बढ़िया प्रोग्राम करा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने को भाग्यशाली इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबके साथ जुड़ा। बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी ने एक शिक्षा की परिभाषा दी थी, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग मैन इनटू ह्यूमन। इसका मतलब कितना गहरा है वो मैं आपको बताऊंगा और उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। 1974 में फ्रांस में एक एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर फॉरे। जैसे अभी अभी हमारे देश में 34 इयर्स के बाद एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और आप सभी को थोड़ा या ज्यादा उसके बारे में पता लगा होगा, और ये भी पता लगा होगा कि सरकार उस नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जा रही। तो इसी तरीके से समय समय पर इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी बनती रही। 1911 में राजगोपालाचार्य की अध्यक्षता में एक एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, और ये आगे भी क्रम इसी तरह चलता रहेगा। उसका कारण यह है कि समय समय पर हमारी आवश्यकताएं अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो हमें अपने पाठ्यक्रम में और शिक्षा के पूर्ण स्वरूप में एक मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर फॉरे, फ्रांस की एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि द एम ऑफ एजुकेशन इज टू इंटेग्रेट 4 क्वालिटीज। वो 4 क्वालिटीज क्या क्या थी? मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ ए चाइल्ड। अब देखिए इसमें सभी स्ट्रेंथ बात आई है, इसका मतलब वो स्ट्रेंथ तो पहले ही है, हमने उसको मोबिलाइज कराना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। अब बात यह आती है कि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा लगा खड़ा जाए, वो तो आपके फिजिकल
मसल पावर को मजबूत करती है, और एट द सेम टाइम मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस उसको भी स्ट्रेंथन करती है। अब इस प्रोग्राम में जो यूथ हैं वो डिफरेंट स्टेरेटा के यूथ्स हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो 15 टू 25 ईयर्स के बीच में आते हैं वो एक अलग स्टेरेटा का यूथ है, एक 25 से 40 तक में आते हैं वो अलग, और उसे ऊपर अलग, लेकिन मैं उन सबको यूथ कहूंगा। यूथ, अगर आप अपने आप को इन चारों फील्ड में स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो सेल्फ कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। अभी हमने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना प्रेयर सुनी, वो आपके स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन करती है, एक उस चीज को स्ट्रेंथन करती है जिससे कि आपके अंदर अपने आप ही मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त जबरदस्त आता है कि जिस बच्ची ने वो प्रार्थना, वो प्रेयर बोली है, उसको पूछिए कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू रियलाइज, और जिसने उसको श्रवण किया है उसको सुनने के बाद वो अपने आप को भूल गया और ये सोचने लगा कि अगर भगवान में इतनी शक्ति है तो भाई मैं क्या नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अब बात यह आती है कि कई बार जो यूथ है वो एक कंफ्यूजन में रहता है, ज्ञान क्या है, भगवान क्या है ना, और ये संसार क्या है। ये तीन क्वेश्चन तो उसके माइंड में हर समय घूमते रहते हैं। और मैं आपको दो तीन बातें ऐसी बताऊंगा जो क्रिस्टल कट, क्रिस्टल क्लियर इन चीजों को आपको बता देंगी। तो देखिए, भगवान कोई हमारे जैसी कोई वस्तु, कोई चीज, कोई इंसान नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम इस संसार में आए हैं, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके बिना क्या हम जिंदा रह सकते हैं? हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम सोने के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो ये चीज हमें कौन देता है? ये चीज हमें, ये नेचर, ये एनवायरमेंट हमें देता है। तो अगर इन एनवायरमेंट को मिला दें तो एक शब्द बनता है जिसका नाम है भगवान। आप कहोगे वो कैसे? भय से बनता है भूमि, कैसे बनता है गगन, वैसे बनता है वायु, ऐसे बनता है अग्नि, न से बनता है नीर। यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंट देन these five तत्वास। तो हम इसी प्रकृति को भगवान कहते हैं और कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन कम्स, ये हमें कैसे स्ट्रेंथ देती है? इफ यू वांट टू लिव, और इफ यू लिव विद द नेचर, अगर आप नेचर के साथ रहते हैं तो नेचर आपको सपोर्ट करता है। और कैसे सपोर्ट करता है? नेचर का एक रूल है, आप अपने को अलग करके नेचर की तरफ देखिए। पेड़ पौधे, नदी नाले, हवा, पानी, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म नहीं कर रहे हैं। और वो सपोर्ट कितना अच्छा है कि जब हवा चलती है
तो पेड़ों के पत्ते एक आवाज करते हैं। वो मधुर आवाज जब आपके कानों में पड़ती है तो एक अलग तरीके का संगम, एक अलग तरीके का सुर, एक अलग तरीके की ध्वनि आपके कानों में जाती है। कितना सुकून मिलता है। सुबह सुबह आप सूर्य निकलने से पहले बाहर किसी जंगल में घूमने जाओ तो आपको कितना आनंद आता है। वो आनंद क्योंकि आप प्रकृति के साथ हैं। ये चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। अपने शरीर के साथ जो अभ्यास, जो एक्सरसाइज आप करते हैं, आपको शारीरिक शक्ति मिलती है। एक शक्ति आपको अर्जित करनी है अपने समाज से। वो समाज से कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके दोस्त नहीं है, जिसके मित्र नहीं है। उन मित्रों से बहुत सी बातें, उनके अनुभव की बातें आप सीखते हैं और अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूसरों से कुछ सीखते हैं तो आपसे भी कुछ लोग सीख रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी एक क्लासरूम है और आपके सानिध्य में आया हर एक व्यक्ति एक टीचर है। किसी से आप बोलना सीखते हैं, किसी से आप खाना सीखते हैं, किसी से आप ड्रेस पहनना सीखते हैं, किसी से आप सही उच्चारण करना सीखते हैं जिसको आज तक आप गलत उच्चारण करते आए हैं। क्या ये जिंदगी में आपके बहुत अहम रोल प्ले नहीं करते? करते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आप गलत बोलते रहे, 15 साल 20 साल के बाद आपको रियलाइज हुआ, अरे नहीं, इसका तो सही उच्चारण ये था और मुझे ये बोलना चाहिए। उसके बाद आप सही बोलने लगे। आपने किसी को नहीं बताया कि मैंने उससे सीखा है। आपने उसको नहीं बताया जिससे सीखा है, लेकिन आपके मन को पता है कि आपने ये कहीं और से सीखा है। यही प्रक्रिया दूसरों के साथ है कि उन्होंने आपसे क्या सीखा है वो नहीं बताएंगे, लेकिन ये सीखने और सिखाने का क्रम चलता रहेगा, चलता रहा है और आगे भी चलेगा। मैं आप सबसे एक वो महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं जिससे इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपको कम से कम ऊर्जा का व्यय करना पड़े और आप अपने को बेस्ट प्रोजेक्ट कर सके, बेस्ट ह्यूमन बीइंग प्रूव कर सके। वो ये है कि जब भी आप अपने दोस्त या दोस्तों का एक समूह, एक ग्रुप बनाएं, तो वो हिट्रोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। मैं एक अलग परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। फर्ज करो आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। नेचुरली मैथमेटिक्स आपको अच्छे लगता है और आप उसके सवाल निकालने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन आपको हिस्ट्री, हिंदी, पंजाबी, सोशल स्टडीज ये अच्छी नहीं लगती।
तो लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं है कि मैंने सीखना है। जब बुक्स उठाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस ऐसे केस में आप अपने आप देखिए कि सोशल स्टडीज में कौन बच्चा अच्छा है, पंजाबी लैंग्वेज में कौन बच्चा अच्छा है, आप उनसे दोस्ती करिए। आप उन विषयों पे बात करिए। जो चीजें आपकी मुश्किलें बनी हुई थी, आपको 2 दिन में लगेगा कि अरे ये इतना आसान था और ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता। आपके अंदर से ही आवाज आएगी। ये आप करके देखिए तो आपको लगेगा कि ये चीज तो बहुत आसान थी। देखिए, किसी भी चीज के आसान और मुश्किल होने की एक ही परिभाषा है। अगर कोई चीज आपको समझ आ गई तो आसान, और समझ नहीं आई तो मुश्किल। तीसरी कोई थियरी नहीं है। अब बात आती है कि ये आपके परिवेश में जो, आप एक और बताता हूं मैं, जो आदमी पढ़ा लिखा आपकी भाषा में नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आप जितना क्लास तो पास नहीं कर पाए, लेकिन आपसे अच्छी एक्टिविटीज, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो प्लेइंग ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे इसी तरीके की बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप नहीं कर सकते लेकिन वो कर सकता है। तो इसलिए हम जो इस प्रक्रिया में एजुकेशन ले रहे हैं, वो बेसिकली हमारी कागजी पैमाने पर लिखा हुआ अकल का पैमाना है। जो एजुकेशन स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही है, उसमें काइंडनेस की बात आती है, उसमें हेल्प की बात आती है, उसमें किसी भी व्यक्ति को दर्द की अवस्था में देख करके आपका दिल पसीज जाए, उसकी बात आती है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप पीएचडी होल्डर हो, कहीं नहीं लिखा कि आप बीएससी हो। इसलिए वो एजुकेशन जिसकी परिकल्पना भारत का हर व्यक्ति करता है, वो संस्कारों से आती है। संस्कार पैदा करने के लिए आपको अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। आप जैसा कोई यूथ बहुत मेहनती था और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के हर क्लास में पास होता था, लेकिन था बहुत ही गरीब परिवार से। उसके माता पिता अनपढ़ थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन आप अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। जैसे कैसे आपके माता पिता आपकी शिक्षा का खर्च वहन कर रहे थे, एक दिन समय आता है कि आप आईएएस की परीक्षा पास कर जाते हैं। क्योंकि आईएएस की परीक्षा में जब पास होने के बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की प्रक्रिया आपको करनी होती है। तो इंटरव्यू पर उस कैंडिडेट को बुला लिया गया, उसके फॉर्म के ऊपर देखा कि भाई घर की माली हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा
आईएएस की परीक्षा में टॉप कर गया। तो इंटरव्यूअर ने उसको बड़ी शाबाशी दी और उससे एक सवाल किया कि आप आईएएस की परीक्षा टॉप कर गए, इसके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जिससे कि आप इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जबकि घर में कोई संसाधन नहीं था। तो वो चुप रहा, क्योंकि सोचना पड़ता है कि मैं ये कहूं कि मैंने दिन रात पढ़ा है, या मैं ये कहूं कि मैं तो शुरू से बहुत ही बुद्धिमान था। तो जब वो 2 मिनट रुका तो इंटरव्यूअर कहने लगे कि भाई आज हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बोला कि मैंने बहुत मेहनत की है, ये उसका जवाब था। तो इंटरव्यूअर बोला कि आज हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे और आप अपने घर जाओ और रात को मोमबत्ती जला करके अपने माता पिता को कहो कि हाथ धोकर के, साबुन से हाथ धोकर के आए, और उस मोमबत्ती में आप अपने माता पिता के हाथों को देखना, और कल इसी वक्त आप इंटरव्यू के लिए आ जाना। उस विद्यार्थी ने ऐसा ही किया। शाम को अपने माता पिता को कहा, अंधेरा हो गया था, कि हाथ धो लीजिए। मोमबत्ती जला करके जब उसने देखा कि उसके माता पिता के हाथों में तो कहीं उंगली कटी हुई है, कहीं हथेली पे नुकसान हुआ है, कहीं पर बहुत बड़ा चीरा आया है, तो उसको समझ आ गया कि जो मैंने आज सफलता प्राप्त की है वो सिर्फ मेरी सफलता नहीं थी, इसमें तो मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा बलिदान था। और अगले दिन जाकर के वो बोर्ड के सामने रोने लगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। तो बच्चों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन आपके माता पिता द्वारा दी गई जो शक्ति है वो किसी भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से कहीं ज्यादा है। उसको हमेशा याद रखना और उनकी हमेशा इज्जत करना, उनको किसी भी तरीके का दुख ना पहुंचे ऐसी आप कोशिश करना। और आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ करके आपसे कुछ बातें करने के लिए रूबरू किया। मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम में आज मुझे अपने विचार आपसे साझा करने का मौका दिया। इच्छा तो मेरी और भी है कि मैं आप सभी से बहुत बातें करूं, और मेरे पास बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन क्योंकि समय चलता जा रहा है और मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील कुमार सर जी। myself ओमकार सिंह चहल, असिस्टेंट प्रोफेसर दशमेश गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन बादल। मैं एज ए टीम ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੂਥਫੁਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਵੈ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you. Thank you so much. God bless you all. Please. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Onkar sir. sir. Thank you, Onkar sir. Now this is the time for our next next speaker, our resource person of the day, Dr. Mayank Anand. He is assistant in French, Department of Foreign Languages, Punjabi University, Patiala. In his achievements, he delivered talks and presented papers at number of national and international seminars and conferences, published papers in many reputed journals. He was awarded scholarship twice by Institute of French, New Delhi, to participate in teachers training program at the Center of Applied Linguistics, France. He delivered a series of talks on difficulties of learning French as a foreign language, cross-cultural differences between India and Costa Rica at University of Costa Rica. He was awarded the Best Alumnus Award by the Department of French and Francophone Studies of Punjab University, Chandigarh. Today, he'll deliver his talk about cross-cultural competence. Over to you, sir. Dr. Mayank Anand. Am I audible? Yes, you are audible, sir, but please unlock your video also. Please show your video also. Your video is not, you are not visible. How come? Because I don't know. I mean, as far as I know, I mean, it's working the video. It's working the video. Okay, so maybe it's a technical glitch. You're audible. Yeah. Okay, so today, I'll be talking about cross-cultural competence, right? Now, what is cross-cultural competence? It's a knowledge, a set of skills that one requires to adapt effectively in cross-cultural environments. Now, the question arises is, what is the cross-cultural environment? Cross-cultural environment is, when you travel abroad, or say a situation where you are, kind of surrounded by people from different cultures. So naturally, in such a situation, there may arise certain cross-cultural conflicts because people, they belong to different cultures, right? So cross-culture competence, it enables you to communicate effectively in such kind of situations. Now, let's begin by discussing the term culture, right? What is culture and how do we acquire it, right? Now, you are all young people,
right? And perhaps one day all of you will travel abroad, say for studies, business, tourism, and I tell you, you stand to gain a lot from your travels when when you know a little about the people, right? There are so many cultures, and there are as many cultures, and people everywhere, they behave differently, right? Now, when people they behave differently, we ask ourselves questions. For example, why do Europeans they shake hands, and why do Japanese they bow down? Why? Simply because Japanese they don't like shaking hands, right? Now, culture it has a strong influence on all of us. There are aspects which are similar. There are aspects which are different. Now, as for aspects which are similar, there is no problem at all. But what can we do about the differences, right? That's where cross-cultural competence has a big role to play. It helps us bridge those differences, right? Are you all getting me? Are you all getting me or not? Yes. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you all Yes, sir. comfortable? Are you all comfortable with my language, or do you want me to speak in Hindi a bit? Yes, sir. Sir, we are comfortable with the language, sir. Yes, sir. All right, Right, sir. right. Thank you, thank you. Now, how do you acquire a culture, right? Say when you are born, right? And after you are born, the first 12 years of your life, they are your formative years. That's where you get to learn the maximum. For example, you're born in India, in Chandigarh, in Ludhiana, wherever, right? If you happen to be there for the first 12 years, rest of your life, no matter wherever you go to Canada, your dream destination, everyone's dream destination, you go to America, France, Japan, wherever. If you have passed the first 12 years of your life in India, you'll continue to remain an Indian. Of course, there might take place certain changes. For example, if you go to Japan, you may become a little more polite, but you will always think cricket. You will always love your Rajma Chawal, your curry chawal, whatever, right? Are you all getting me? Yes, sir. Sir. Uh, Sir. So, yes, sir. now, I mean, you've kind of understood, what cross-cultural competence is. Now, what are the possible areas of cross-cultural misunderstandings or conflicts? Values, for example, when we talk, for example, values like if you talk about Germans, Austrians, British, Finnish, they are all very punctual people. But we Indians, are we punctual? No, we are not. I mean, somebody calls. I mean, somebody, I mean, calls upon us. Say at 5 o'clock, we reach there at 5:15. So, I mean, we can kind of say that we don't have that kind of respect for time, as compared to the Nordic people. Italians, again, very unpunctual. Latinos, unpunctual, right? So, the values. And then comes the core beliefs. For example, if you ask a German, what is 2 plus 2? He would say 4. And the same question, if you ask it to a French, he would say, depends. Okay, 2 plus 2 is 4. But what if I add 2 cats and 2 dogs? Not possible. Are you getting my point? Can we add 2 cats and 2 dogs? We cannot. And then there are different speech styles, right? Certain cultures, they speak very softly, and certain others, they are very loud people. For example, if you talk about French, very soft. Germans, very soft. French, very soft. Spanish, ultra loud. Latinos, ultra loud. Italians, no limits, right? And then there are listening habits. For example, you're addressing a group of Americans. Now, Americans, what do they love? They love entertainment. So we have to kind of have some strategy, in order to make them listen to us. So while addressing a group of American people, for example, one always begins by cracking a joke.
You crack a joke and then you make them listen for say good about 10 minutes. So फिर आपको 10 मिनट तक सुनेंगे. Then again crack a joke. Then again, they'll be attentive for another 10 minutes. When it comes to Germans, for example, then you have to be to the point, very to the point, Sava. And then the most difficult is Japanese. In case of Japanese, they say, whatever you say, you repeat it at least 5 times. In Japanese culture, it is considered quite unpolite and polite to say no. So even if they don't understand a word, and if you ask them, have you understood Japanese, they would always say yes. So make sure, I'm kind of giving you examples, right? Are you all getting me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. Cultures have, when we talk about culture, it has got many layers. Based on those layers, now we'll be talking about cross-cultural competence or cross-cultural communication. Or I would, kind of try to explain you, how important cross-cultural communication is, or how important it is for us to develop cross-cultural competence, because I know all of you, most of you will travel abroad one day. Am I right? Yes, sir. Our dream destination is? What is our dream destination? Canada. Canada, sir. Canada. To go Yeah, abroad. जिसको ਆਪਾਂ पंजाबी ਵਿੱਚ कनाडा कहते हैं, है ना? Right? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Sir. So when we talk about culture, it has got many layers. See, the problem with the term culture is we cannot define it. We can only understand it vis-a-vis its different layers, right? Now, based on those layers, I'll be sharing some anecdotes with you. You understand anecdotes? I'll be sharing some cross-cultural stories with you, right? Some of my own experiences, right? Are you interested? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very much. Yes, sir. Because I don't want to, I don't want to get into theory. Yes, sir. Theory is very boring. So it is always, good to communicate something via stories, anecdotes, right? Now, I'll be giving you, kind of 2 to 3 examples, of every layer. Like, for example, the first layer that we talk about is the regional layer of culture. Am I right? When we talk about regional layer, that is when you travel from one state to the another, right? You're all Punjabis. Even I too, I happen to be a Punjabi. And when you travel to Haryana, you feel there's a difference of culture. You feel there's a way, there's a difference, the way the people, they communicate, the way they behave. Okay. So I'll tell you one very funny story that happened some centuries ago. When I say some centuries ago, that means some 20, 25 years ago, right? I was at a small town called Rewari in Haryana. Have you heard of Rewari? Yes, sir. Yes, Right, sir. right. Yes, So what sir. happened? I was waiting for my bus at the bus stop, and fortunately or unfortunately, I was not wearing a watch. Right? So a person, a young guy standing by my side, हमने उससे पूछा, भाई साहब टाइम कितना हुआ है? मेरे बाप ने ना ये घड़ी तेने टाइम बताने के लिए लेके दी. And I was kind of taken aback. What kind of behavior is that? I was about to react. अरे नाराज ना हो, 3 बजे हैं. Now, you're getting my point. Yes, Haryana people, they have that kind of wit. At times you feel, what kind of reaction is that? But that is true with all the Haryanvis, right? And then, they're very innocent people. Once I saw a man with a brick in his hand running after a dog. कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है. I said, what's the problem? क्या हुआ? भौंक रहा था. मैंने कहा भौंक रहा था, जानवर है. अरे तो मैं भी तो जानवर हूँ. See? Are you getting my point? yes, sir. Right? Sir. And the same kind of experiences, I lived
when I started working at Punjabi University, Patiala. Right now, during those days, I was preparing to write my Punjabi exam of class 10. तो हमारी आदत थी, हम जो भी दिन में सीखते थे उसका एक बार प्रयोग जरूर करते थे. हाँ, ये कई बार होता था कि अर्थ का अनर्थ हो जाता था, राइट. तो एक बार क्या हुआ, now this again is quite cross cultural. See, you kind of, I mean, during the day you live these cross cultural situations many a time, am I right? Now what happened, I read a proverb, अकाल चलाना कर जाना. अब हमने अकाल चलाना कर जाना तो पढ़ लिया, पर उसका अर्थ नहीं देखा, और हमने सोचा जो व्यक्ति अचानक से ही चला गया, ऐसे ही उठ के वो अकाल चलाना कर गया. I was sitting in my office and a professor came and he asked me about some man कि फला व्यक्ति है. मैंने कहा अब आया मौका, अब तो हम यूज करेंगे. और हमने बड़े गौरवान्वित होकर कहा, बहुत गौरवान्वित, proud to be using that expression, मैं अकाल चलाना कर गए. The key, I was like, why is this man exaggerating? I mean, बिना बताए कोई भी जा सकता है, अकाल चलाना कोई भी कर सकता है, वो करके कोई बड़ी बात हो गई इसमें. I said, एक्टिवेट होया. मैंने कहा हो गया, it happened. अच्छा, टाइम कितने बजे था? मैं क्या 5 बजे क्लास की आंदे होने. You see, so in a different culture, it is again very important for us to be very particular with the language, with the kind of words that we use, right? So that was about the regional layer, right? I mean, the kind of misunderstandings that may take place when you happen to be in a different region. Then there is this layer called professional culture. That is on the basis of your profession. Naturally, a businessman won't speak the same language as that of a professor or as that of an engineer. Both of them, they would have different perspectives, different way of looking at things, and different way of expressing themselves. For example, now again, a very funny example, I'm good at that. Some years ago, a friend of mine who happens to be a businessman, he visited my room, right? And he saw it was an encyclopedia that was lying on my bed. And what does he ask me? Paji, ye kitab padh li tusi? I said, but who reads an encyclopedia? I said, but this is an encyclopedia. You use it for reference purposes. He said, oh, ta theek hai, par hegi ta kitab hi na. Padh li. Now you see, I mean, a thing that is supposed to be meant for reference, he's looking at it as a book. He's a businessman. He knows nothing about, and the same thing happened when he saw one research journal lying in the rack of my books. A research journal. Paji, abhi padh li. Ab duniya mein koi bhi vyakti research journal nahi padhta. Right? You go through it when you require it. Again, meant for reference purpose. Okay. Now we move on to the national layer, the most interesting of all and my favorite. Right? Now once, what happened? I was going to Costa Rica, right? And I was transiting through Panama City. Right? Now, I had almost 1 hour left for my flight to take off, so I decided to buy myself a cup of coffee. I went to the shop. I ordered a cup of cappuccino, right? A lady, she says, a cup of cappuccino that costs $3. What do you think? How I would have behaved? What would have been my reaction? I ordered a cup of cappuccino and she says $3. It costs $3. How would I react? Tell me, anyone.
Sir, you'll pay the amount. What? You'll pay the amount, the $3. Okay. Now tell me if the same thing happens to you. Now tell me one thing, Rishabh. If the same Rishabh team, Rishabh, you're Rishabh? Sir, Saurav. Saurabh. Yeah. Hi, Saurabh. Saurabh, now the same thing happens to you in Punjab. You visit barista, right? You order a cup of coffee, and you know, before he delivers you the order, he says 200 rupees. How would you behave? You would get angry. Yeah, It sir. is as if the person is trying to say, look, perhaps you may not have money, perhaps you don't have money, right? Yeah. Look, and I got angry. I said, okay, I'm canceling the order. So I called upon my Latino friends. I said, what kind of people are you, Latinos? I ordered a cup of cappuccino, and he tells me the price. What they said, that's how it is. That's how it is. I mean, all Latinos, you know, you visit any restaurant, any soda, any kiosk, no matter whatever you order, they tell you the price, for example. Now, another very good example of, you know, national culture. I was at the University of Nantes, France, with a friend of mine, and she wanted to buy a pen. So we went to the shop. और जैसे होता ना हिंदुस्तान में कहते हैं हिंदुस्तान में like when you ask for a pen, what do you say? What do you normally say in Punjabi or in Hindi? Saurabh. पेन दे दो. पेन दे दो. तो हमारी जो मित्र थी उसने भी फ्रांसीसी में बोला पेन दे दो. Es que vous pouvez me donner un stylo? क्या मुझे आप पेन दे सकते हो? एकदम से जो शॉपकीपर था उसको गुस्सा आ गया. He said, sorry, I cannot give it to you. I will sell it. हम देंगे नहीं, हम बेचेंगे. क्योंकि इंडियन के टेस्ट में no matter whatever we buy, we say हमें दे दो. We don't say हमें बेच दो. Right? Are you getting me? Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, again, you know, especially when it comes to France, no matter wherever you go, right, they make sure that you wish everyone. They expect that even if happens to be a waiter, you know, the owner of the shop, wherever you go, you have to wish while you enter the shop and when you make a move from there. So once it happened, you know, I was in France for, say, good about a month. I was very tired of speaking French all the time. तो उसमें कई बार क्या होता है ना, आपको हिंदी भी भूल जाती है, अंग्रेजी भी भूल जाती है, and you actually feel tired, you know. Imagine yourself speaking in a foreign language, you know, 24 hours for a month. It is tiring. So at times, you know, you want to live your own self. आप अपना भीतर का कुछ जीना चाहते हो. So I enter this cafeteria, I'm very tired, and I say, "And cafe." I say, "One coffee, please. One coffee." And I don't even add in there, "S'il vous plaît." I don't wish the man. And the man is like this. And he says, "Excusez-moi, excusez-moi, excuse me. Bonjour. Hello." Hey, bonjour. Then he says, "Un café, s'il vous plaît." He reminds me that, sorry, you ordered for a cup of coffee, but you didn't say, "One coffee, please." And I repeat, okay, un café, s'il vous plaît. A coffee, please. Okay. Then I'm done with my coffee. I pay my bill. I'm about to move without saying a word to the man. And he stops me again. Excusez-moi, monsieur. Excuse me, sir. Au revoir. Goodbye. You get my point? I mean, this is one small example. Yes, sir. That's kind of reflection on the behavior of French people. No matter wherever you go, you have to wish them. Right? And if you don't wish them, they look at you as if, you know, I mean, your people, they didn't teach you anything, that you were not, you know, brought up well by your parents. Are you getting me?
right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. I'll give you some more examples. Well, that happened with me at a hospital in Besançon. Right? Besançon, it's a small town in the northeast of France. It's in the region of Franche-Comté. So I visited one doctor's clinic there. I was with a friend of mine. We entered the waiting hall and we sat down. And everyone around was looking at us as if we were aliens. Not just as aliens, I would rather say they were looking down upon us as a very impolite people. Right? And we just couldn't understand, the possible reason behind it. We entered the waiting hall and we sat down there quietly without uttering a word, and everyone was like, I mean, what is this? And then a couple enters, right? And they wish everyone, bonjour tout le monde. Now, you tell me, that kind of culture, is it possible in India? It's not. And even if you try it, I don't think people, they would look at you as normal people. Kenge pagal ho gaya hai. Am I right? Yes, sir. You are Yes, right. sir. You are right. Yes, you're right, sir. Yes, sir. दिमाग ठीक नहीं है इसका. Then another thing, that I noticed that McDonald's and Burger Kings, especially in Europe, when you're done with your eating, right? I mean, all your stuff, your plate, whatever, right? You drop it back to the dustbin. Do we do that in India? No. After you're done, Yes, sir. you drop your stuff in the dustbin. Never. We never do that. And I tell you, once I tried doing it in India at a McDo in Amritsar, रुला दिया था लोगों ने. क्या मजाक उड़ाया था पंजाबी में हमारा. बहुत ज्यादा मजाक उड़ता है, बहुत ज्यादा. Okay. Up. Now, my experience with the police in Paris. Now, usually, like, imagine at 3 o'clock, you are in an isolated street in Amritsar, and comes a gypsy, a police gypsy. What would be your reaction? Are you all getting my question? Saurabh, you answer that. Yes, sir. Yes, sir. What would be your reaction? Say, at 3 a.m. in the morning, you're roaming in a street, in an isolated street in Amritsar or in Ludhiana. एक सुनसान गली में आप जा रहे हो और एकदम से पुलिस की गाड़ी आ जाती है. What would be your reaction? Sir, two. One, and second, I'll try to skip out or run away or something. कुछ हुआ है, maybe कुछ street में कुछ हुआ है. We'll be utterly surprised. एक बार तो डर जाएंगे ना. देखो मेरा रिएक्शन हुआ, डर जाएंगे. पहला रिएक्शन I took me help only. ठीक है, we will be interrogated. शायद मार भी पड़ेगी अगर पंजाब पुलिस है. क्योंकि वो पहले थप्पड़ मारते फिर बात करते हैं, right? हमारे पास जाके रुक जाएगी उन्हें हम चोरी. Now the same thing happened with me, when I was at the Eiffel Tower, and me and my friend, we were coming back, and while we were walking on the road, there came, this van of Parisian police. They stopped us. They asked us to, show our passports to them, and they asked us, where exactly we were going. भीतर से हम डरे हुए थे कि अभी मार पड़ी कुछ होगा. डर जाता है इंसान है, हिंदुस्तानी, right? उसने कुछ नहीं किया. They made us, sit in their gypsy. We were still scared, right? स्वाभाविक था, डरे हुए होते हैं. That gentleman, he dropped us to a hotel, and he gave me his visiting card. Okay, next time you get into any kind of problem, please call me on this number. Now, we don't expect that kind of behavior from a policeman in India, do we?
No, sir, we Sir, do not. never, sir. Never. Absolutely not. Not expected. Never, never, never. तो वहां से हमें थोड़ा सा ये विश्वास हुआ कि I mean even police can be gentle, right? Even they could be nice. Now, another example of a beautiful example of cross-cultural conflict, right? Now, we were at this workshop in Paris, right? And it was the last module of it was the last class of that module, right? We were supposed to be coming back to India the very day. Now there was this friend from Banaras, right? So it was about to be over. There was a French lady in the class. She got up, right, to hug that friend of mine, another teacher from India. She just got up to give him a hug, and the man was like this, as if he was about to be attacked. And she asked him, "Hello, kiski se passe? What's wrong?" And the man says, "I'm sorry, I'm married." You get my point? Now this is again Yes, sir. something which Yes, right? sir. In their culture, it's quite normal, that you hug people. But in our culture, no, it is not. But then we have to kind of program our psyches in a way that we don't get into any kind of comfortable moments, right? Are you getting my point? It is just about how you program your mind that yes, such a thing can happen. I remember during my first visit to Costa Rica, right? I was, going to a nearby shop with a friend of mine to buy bread, and we met a neighbor. And she introduced me to her, saying, friend from India. And the lady, without greeting me, without saying anything, she gave me a hug. And then she says, "Don't get uncomfortable. We Latinos, we happen to be the greatest touchers of this world. On est les plus grands touchants de ce monde." She said it in Spanish or in French. Are you getting my point? So, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. people, they have their own ways of doing things in their respective cultures. I know, like every time you visit a foreign country or a different region, you always do good to know a bit about the people, about their culture in advance. Are you getting me? That's what cross-cultural competence is all about. Right? Now the question is, I'm looking for my papers. You see, I do have a very bad memory. That's what proves that I'm a human being. Am I right? Lost my papers. Well, now the question is, what steps can we take or should we take in order to develop cross-cultural competence? I'm sorry, Saurabh, because you're the only one I can see on screen. Sir, may I speak? Yes, please, Saurabh. No, sir, I'm Rishabh. Yes, Okay. Anyways, Rishabh, please. Okay. Sir, we can develop good cross-cultural competence by interacting or by learning things from online by using the advantage of internet. Very good. What else? Sir, my suggestion would be rather than we antagonize Western culture, we should rather start embracing it. This is the first step Yes, for me. I mean, it is not just about embracing the Western culture. It is rather inculcating that sense of respect for all the cultures. Yes, Yes, sir. sir. Because we've got to understand we are all different people, right? Yes. Now I remember, sitting in a French restaurant and a very staunch Hindu sitting by my side, and he saw one lady, she was eating beef. उसने केवल उसको गालियां नहीं निकाली. Now we have to have some level of tolerance. Okay, we don't eat beef, Yes, sir. but they do. But then we should be okay with it. I mean, nobody is forcing you to do the way they do it, right? But we can at least have some respect.
हमें नहीं थोड़ी कि वहां पे खड़े होके गालियां देनी शुरू कर दोगे, पागल हो जाओगे. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, I mean, what else? For Yes, me, sir. the I can say. Can I speak? Yeah. Yeah, please, Yes, sir. please. Yeah, आपने just अभी कहा कि we should not react to a person. We should just respond, right? So I think कि for making people interact with each other, we should Shivani, can you put speak a bit ourselves in louder? their shoes. Like, Shivani, yes, can you sir. speak a bit louder? Yes, sir. सर मैं ये कह रही थी कि I was saying कि जब भी हमें किसी भी इंसान को understand करना है, for understanding them, we should just keep ourselves in their shoes. Because every time we can't react to a situation, but Very we should good. respond. Very good. Sir, may I Very speak? good. Yeah, please. Sir, I think कि cultural aspects की knowledge होना जरूरी है, because maybe कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने कोई चीज वो जो करे, maybe sometimes वो offensive भी हो सकती है आपके culture point of view से, but at the same time Yeah. उनके लिए वो चीज है ना, वो ऐसा कोई उनके लिए वो mind नहीं करते, but वो ये Very good. हाँ वो चीज उनका है कि respect करनी, respect मेरे लिए तो सारी ये कि cultural knowledge होगी तो आपको बहुत अच्छे से हाँ, समझ आ जाएगा. exactly. Exactly. Very good. Yes, Excuse me, sir. may I say something? Sir Yeah, means please. Sir, Please. I think curiosity I होनी think चाहिए किसी भी culture को समझने के लिए. Very good. You should have the curiosity to learn new things and accept it. Very good, yes. Parul. So Very may I good. say something? May I say Yeah, something? please. sir, may All I of say you, you're something? welcome to say something. Please. Sir, One by first one. of all, I think when we talk about the cultures, we should have the ability of acceptance. Like we should accept every culture, their norms, because every culture has a different perspective, has a different point of view to think, to travel, to explore the things. So we should develop the thing of exploration among us, Yeah. because everyone is exploring in the world. So Very good. we are just coming here to explore something new. So explore from the world and accept it as well as you can. Very good. So may I So I speak, sir? want to say Yeah, something. please. So adding to it, Like, sir, as we all know that there is a saying, sir. Sir, Yeah. there is a saying that the charity begins at home. Very So good. initially, first we have to understand our cultures, are the cultures around us, the regional cultures which we have After around this us. amount. Like Very good, yeah, Sakshi. Very just good. like we have northeastern culture, Madrasi culture, everything. So I have Very good. experienced this. I have been so many places throughout the India, and my last place was actually Chennai. And from Chennai, I have learned Tamil and Tamil culture and Madrasi culture so well that I love Chennai and Madras now. I too am But learning. I belong to UP. I too am learning to sing in Tamil. I mean, I've been Yes, singing in sir. French and Spanish. Now I'm Yeah. learning Tamil songs in The Tamil Tamil. is a very lovely language, sir. Very good. Good. Sir, I want to May I add say one something? more thing that if it is possible, we can also explore the world at least once or twice in 2 years to just gather the knowledge. It would not only expand our horizon, we would also travel. It would be good for our mental development, our cognitive development, and it would Exactly. also be pleasing to others. See, Sir, I that would is like to add one more. I think for cultural competence, for actually learning something, we don't just need to travel somewhere. If we are in a situation of COVID and we can't travel, so we can take the help of books, because books are the best friend of human beings, very and they can teach us a lot. yeah. Yes, Hi, Mayank. sir, I would like to add one more thing that Yeah, please. अगर हम कुछ भी अपने बारे में एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग खुद को एक्सप्लोर करें, खुद की जो हमारी जो माइंड नैरो माइंडनेस है उसको खत्म करके ओपन माइंडेड करें, हम एक्सेप्टेंस को कवर करें, तो हम लोग किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं और उनके भी चीजों को, कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं. सर, एडिंग वन मोर पॉइंट टू दिस, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का पार्ट ना मानते हुए हमें अपने करिकुलम में भी ये इसको एक तरह का इंट्रोडक्टरी और जो है कंपल्सरी चीज माननी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो है ना, नहीं तो किसी एक ही चीज को स्पेसिफिक कर दोगे तो फिर वो उतने ही वो लिमिटेड हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज. सही बात, बिल्कुल सही बात. एक्चुअली समस्या क्या है ना? Yes, please. Moreover,
say something. I believe we are Indians, and Indians are already known for their diversity. The culture of India is so diverse, and I believe when we already start communicating with other communities of India, then I guess it's not a problem of tolerance for Indians, as Indians are already diverse. No, no, no. I tell you, I can give you some examples. Once, it was in Chandigarh. There was some prize distribution, some prize distribution thing was going on, and the chief guest was a French. Now, French people, they have this habit of giving you a peck. You understand a peck? It's a side kiss. So youngsters, of course, they would not have any problem because youngsters are still, a bit tolerant as compared to the big people. I mean, our elders, right? So there was this old lady, who came up to the podium to get a prize, right? And the Frenchman, again, kind of advanced a bit to give her a side kiss. Lady ne takka marya, ja, mar jaake, sharam nahi aandi. You get my point? Of course, we are diverse, but Yes. then there are certain things, to which we are not open. Are you getting Sir, my point? yes. Sir, I would like adding to it, I would like to say that सर मैंने Yes. काफी सारे नेशनल कैंप्स अटेंड किए हैं और उसके अंदर मैंने देखा कि हमारे जब डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो हमें टू वे प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने Yeah. भी कहा कोई भी कल्चर को सीखने के लिए हमें उस कल्चर को अपना कल्चर को बांटने के लिए बहुत जरूरी टू वे प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल। सभी बहुत ईगर थे हमारे साथ, जैसे राजस्थान ये हिमाचल के जब ये डांस वगैरह की होता था कि हाँ वो कंपटीशन, वो बहुत ईगर होते थे कि हमें आपका डांस सिखाओ। हाँ, कोई बच्चे आते थे केरला से, आते थे केरला वाले जो मैंने देखा केरला वालों को नॉर्थ वाली साइड पंजाबियों के साथ इंटरेक्ट करना इतना उनको अच्छा लगता था। वो इतने कुछ खुश होते थे छोटी छोटी बातों में, आपने ऐसे बोला, आपने ये खाया। मतलब हमें टू वे प्रोसेस में ओपन भी होना जरूरी है कुछ सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, Sir, I बिल्कुल। would Sir, like to adding add one something point. here. I want to interrupt. ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Yeah. ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ੀਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਚਾਹੇ Very good, very good. सर मैं एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि भले ही इको हो रही है, हाँ, भले ही चलो कि हमें नहीं पता नॉलेज चलो उतनी हो या ना हो, बट ये चीज़ का पता जरूर होना चाहिए कि अगर आपके साथ अगर मान लो जैसे वो बीफ वाले अपने एग्जांपल दिया तो मेनली क्या होता है कि इंडियन पीपल या हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो पीटना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आपको नॉलेज चाहे उतनी उसके उनके जो कल्चर की है या उतनी नहीं है, बट ये कि डूज एंड डोंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, कहीं कहाँ पे नहीं करना है। Very It's humble request as a student who wants to learn different languages. We would like to know your journey, and how you developed your interest and where did you learn different languages. Everyone is taking part. I think सर का लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग है कि स्टूडेंट्स हमारे अपनी बात रखने के लिए और फॉरवर्ड हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप थोड़ा अब एंड पॉइंट पे लेके जाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को फॉरवर्ड करें। एंड पॉइंट पर आ चुका है, ये तो चर्चा चल रही है कि सबको अधिकार होना, सबको इस बात का अधिकार है कि वो अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर सके। End of the day, that is the purpose, I mean, had it been a monologue, it would have been very boring. And I'm kind of happy that all of you participated, you interacted, right? इस सौरभ एक सवाल पूछ रहे थे, उसका हम उत्तर देते हैं, फिर इसको फाइंड अप करते हैं। Yes. Sir, who loves to learn different languages and who is keen interested. Sir? I would like to know your journey, like how you started and how you developed your interest and from where did you learn these languages, how you grow. Yeah. Okay, I will answer this question. Yes. Yes. Your maple Kajalpreet Kaur. Yeah. Yes, Kajal. Sir, as I am also learning French language. Okay. And how easily we can get the knowledge of we can learn language fastly. See, number one, you've got to kind of forget that you have to, learn it as you said, fastly, right? There is no shortcut to learn a language. It takes years, it takes centuries, right? And I mean, apart from the the learning part, the things that you get to learn from the books,
right? You should watch the movies, you should listen to songs, you should sing songs, right? Interact with people, and your focus should be to learn the spoken language. End of the day, that's what matters, nothing else matters. And as Saurabh, he asked me question, how did this journey start? Saurabh, some centuries ago when I started learning French, I was really not even aware of French being taught in India. I was not even aware. I had gone to Chandigarh, this Sector 11 college for admission, and I had chosen maths, economics, and English as my electives. तो वहाँ पर एक सरदार जी थे, ईश्वर का रूप बने, उन्होंने अंग्रेजी काट कर वहाँ पर फ्रेंच लिख दी, और हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते पाजी जाहून बस लिखता. So I mean that's how it started, right? I learned French. Now I'm learning Spanish, right? और वो करते करते थोड़ा बहुत पोर्चुगीज भी समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत डच भी समझ लेते हैं. And this whole journey is very interesting. It takes you places, right? So I think that's enough for today, for the moment, right? And it was very nice interacting with all of you. The best part was, that was one thing I was kind of scared of. I didn't want it to be a monologue. Grace of God, right? It was a dialogue. Sir, how can we? Dr. Mayank, hello, Yes. Dr. Mayank. It was by far the best sessions. I'm Dr. Sharma, Neha Sharma from Home Science College, Chandigarh. So I have thoroughly enjoyed your session. Learned a lot about different cultures, languages, how important it is to cross culturally, know the systems and the know-how. How important is it to travel, connect with people, interactions? By far, I'm really impressed. Wonderful session it was. My whole compliments to you for the same, sir. Thank you. Thanks for the compliments, ma'am. Thank you. Thanks a lot. So, can we connect with you if you want? Like, are you on LinkedIn or something? You can ask, you can take my phone number from Dr. Monita Dhiman, right? And you are welcome to call me whenever you want to, 24/7. I'm available. She knows me, right? Okay, great. Okay. Thank you very much, sir. Actually, sir is my good friend of mine, so I can give his number to you, and he is always available. Always available means I'm available 24/7. Right. Right. And I'm serious about it. Thank you very much, sir. Thank you. Now over to Dr. Amanpreet Kang. Thank you. Thank you, Monita ma'am. Thank you, Monita ma'am. So we were listening to Dr. Mayank Anand on the topic cultural competence, cross-cultural competence. She described the topic as cross-cultural competence enables us to understand the people from different cultures. Sir very beautifully elaborated the different features which identify people from different cultures, like pitch of their voice, their habits, the way they talk, the values associated with their conversation, etc. The examples sir shared with us they were very interesting and also helped us to understand the cultural differences. और एक बात यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी कि सर जब हिंदी में बात करते हैं तो I don't know संजय दत्त जी, पता नहीं आप सबको किसी को लगा कि नहीं, मुझे बहुत ऐसे फील हुआ और बहुत अच्छा लग रहा था सर को सुन के. और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इस बेस्ट पार्ट क्या था इस सब सेशन का, जो अभी मैम ने भी कोट किया कि इंटरेक्टिव था ये सेशन और बच्चों को अपने भावों की अभिव्यक्ति का पूरा मौका मिला और हमने सभी ने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया. होपफुली हम फ्यूचर में अभी हम वर्चुअली ऑनलाइन सर को मिल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सर का ऐसे लेक्चर सामने हो हमारे और हम रूबरू हो सके. So finally, on the behalf of our team, I thank you, sir, for sharing your valuable time with us. Thank you so much, sir. Yeah, thanks. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगी मयंक सर को. You rocked, sir. जी. Oh, good. Thanks a lot.
What a compliment, yeah. Anyways, तो आने वाले जीवन में अगर ये कोरोना काल या कोरोना की हम पर कृपा रही और दोबारा से ये तीसरी लहर ना आई तो हम साक्षात मतलब हम मिलेंगे, राइट? जी 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 बिल्कुल सर. I know. Okay, see ya. Thank you so much. Bye sir. Okay, thank you. Thank you sir. Madam Monita. हाँ जी मैम. So should I invite Dr. Neena Pachni ji? Ma'am, we can move to that interactive session right now. Okay ji. Okay. So ma'am, what kind of it will be? So as in our schedule, we have Let's Sing interactive session. So voluntarily students are going to sing. You just hand over the stage to Rupinder ma'am. Okay. So I would like to invite Monica ma'am, Dr. Rupinder for this session. That is Let's Sing interactive session for today. before we move further, we actually had one interactive session left from earlier yesterday. Like only 4 teams were in. Yes, she will handle everything. Rupinder ma'am will handle. Saurabh, thanks for reminding us. Very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning, good morning. Lots of good morning. Okay. So I have received a few names. So I suppose these names will be participating for today's interactive session. We'll actually give opportunity to each and everyone in the coming interactive sessions, but at the same time, we cannot deal with the 237 number at a time, right? So that's the reason I had asked for particular, names from a team number. So I am just reading out the names. So these names kindly be ready. From team 6, we have Abhay, Nitesh, Sumedha. Just hold on. I guess somebody's mic is on. Kindly mute yourself. Okay. So in team 6, we have Abhay, Nitesh, Sumedha, Garima, Mohammed, Hisham, Manpreet and Kiran. From team 8, we have Sharanjeet, Chahat, Gurpreet, Navjot, Navdeep and Shruti. From team 4, we have Aarti Kumari, Nisha, Harpreet Kaur, Manjeet Kaur, Harnaz Virk, Pavandeep Singh and Lovepreet Kaur. Then we have from team 2, we have Anshul, Mitanksha, Mukul, Parneet, Pallavi, Tanishq, Sakshi and Manveer. From team 7, we have Gagandeep Kaur, Akansha Puri, Rishika, Simranjot Kaur, Rupinder Kaur, Priyanka Hooda and Gagandeep Singh. And finally, from team 1, we have Ekam, Manpreet, Simran, Ravina Rani, Garima Singh and Sumanpreet Kaur. Right? So are you all ready, everyone? Excuse me, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, have you Just mentioned team 5?
I suppose team 5. Just hold on. Just hold on. Daljit ma'am, can you help me out with the names of from your team? Daljit ma'am, can you help me out? Yes, we have from team 5. I've received it just now. From team 5, we have Raveen Kaur, Samriti, Kajalpreet Kaur, Preeti Dheer, Rachita Jain, Ananya Singh, Dilbag Kaur, Vani Malhotra. Daljit ma'am will be considering name till Vani Malhotra. The other 4 will be considering tomorrow for tomorrow's interactive session. Would that be fine? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I request all the teacher in charges kindly take a note of these students who are participating in interactive session for today. Okay. So I'm not going to call upon team wise. What I'll be doing is I'll be just calling them by name. Clear? So you have to be ready. You have to be ready. Clear? The first student ma'am. I call upon. Yes. Please go ahead. Make it fast. टीम 3 के नेम्स नहीं बोले आपने. I think मुझे जो names receive हुए हैं, मैडम सब तो पहला मैं ही भेजे सीगे. सर मैंने एक बार ही चेक कर लेने दो. मैं अनाउंस कर दूंगा. हाँ जी टीम 3 के नाम अनाउंस कर दीजिए मैम. टीम 3 के 3 सर के ना. हाँ जी हरबिलास सर के नाम स्टूडेंट्स. सर मे भी आपके आए नहीं हुए यहाँ पे हमारे पास. सर हमारे पास सब तो पहला मैं पहुंचे ही नहीं भेजे. है. सब तो पहला जो तुसी किया सी ना, सब तो पहला मैं ही भेजे. सर आप दोबारा भेज सकते हैं. व्हाट्सएप में दोबारा भेज दीजिए प्लीज. I'm not able to find the names of these team 3 students. Monita ma'am, did you receive? No ma'am. हीरा सर आप फॉरवर्ड कर देंगे प्लीज. Yes, I got the names, ma'am. From team 3 we have Akansha, Akriti Nair, Akdeep Kaur, Amisha Kent, Ankita, Anvi Jain, and Arshdeep Kaur. I hope everyone is ready. I'm calling you by your names only, right? I'll say the team number as well because there are students who are namesakes, right? So what you have to do? I'll just say a name, clear?
that student is going to come forward and immediately respond to whatever I say. Clear? We are just judging you on the basis of your spontaneity. Clear? Make sure you are representing your team, not only the team, but you're representing yourself individually as well. Clear? I request teacher in charges, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो लेआउट में जाके स्टैक का बटन दबा दीजिए, लेआउट में जाकर स्टैक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट बोलेगा उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी, जो स्टूडेंट बोलेगा उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी. Students, you have to turn on your camera and then unmute yourself and then speak. Make sure you turn on your camera. Okay? Okay. The first student I call upon is Akriti Nayyar from team 3. Akriti Nayyar from team 3. Akriti, if given a situation, a very happy situation. Hello, Clear? everyone. Yes. If given a, yes, absolutely, you're audible. If given a situation which is a complete happy one, happy situation, like you have come out with good results, and I ask you to sing a song based on your situation, which song will you sing? Make sure everyone, you don't have more than 2 minutes. Okay. Yeah. You're happy with the situation and like you have come out with your flying colors in your exams और आपको एक song गाने के लिए बोला जाए तो आप क्या song गाएंगे? This is an opportunity for you to sing as well. Monita ma'am, kindly note the time as well. We're not giving more than 2 minutes to any student. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, can I start? Yes, please, please. Please go ahead, Akriti. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, पिया जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Akriti. Teachers in charges, kindly note the spontaneity and the relevance of the song as well to the particular situation. Clear? Okay. I call upon the next candidate from team 6, Simran Singh. Simran Singh. Simran Singh, is Yes, Simran ma'am. Singh here? Yes, Simran Singh, if you are given a situation like you have lost your love, you have lost your love. Yeah? What kind of song will you sing? क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लगे, जग सोना सोना लगे, कोई रहे कब अपना. That's Good. all. Okay, good. Okay. Next we have from team 2, Mitanksha. Mitanksha from team 2. Yes, ma'am. Yes. Situation is you want to sleep but नींद नहीं आ रही है, तो आप गुनगुनाना चाहते हैं. मैम नींद नहीं आ रही और मैं गुनगुनाना चाहती हूँ. हाँ जी, क्या गाना गाएंगे, क्या गाना गुनगुनाएंगे? निंदिया ना याद सताए, निंदिया ना, ये वाला मैम. Okay, very good. Okay, we move on to Kajal Preet Kaur from team 5.
काजलप्रीत कौर from team 5. Yes, आपके ma'am. किसी दोस्त ने आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया. गाना गाइए. Okay, ma'am. दोस्त दोस्त ना रहा. Ma'am, this one. I don't know the complete. Okay. Can anybody sing on her behalf? Yes, ma'am. I can Hanji? sing, ma'am. Yes, ma'am. Only one student. Yes, ma'am. I would appreciate अगर उसकी टीम 5 में से ही कोई उसको हेल्प Ma'am, कर may दे. I? Yes, yes, please. मैम दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी में तेरा एतबार ना रहा. हाँ भाई कैमरा ऑन है. No. Okay. Okay. Next we have students from team 4. Harnaz Virk from team 4. अभी आपकी सिचुएशन है कि आपने किसी इंटरव्यू में आप गए और आप वहां सिलेक्ट नहीं हुए, तो आप सॉन्ग क्या गाएंगे? आप किसी इंटरव्यू पे गए थे और आप सिलेक्ट नहीं हुए. Harnaz, you're not audible. Unmute yourself. Harnaz, आपकी आवाज नहीं आ रही. I'm not able to. Yes, yes, yes. Yes, you are audible. You're audible now. हरनाज, आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, we may come back. Okay. I call upon Pavandeep Singh from team 4. Pavandeep Singh from team 4. Pavandeep Singh from team 4. Okay, you lost the chance. I move on to a student from team A, Rajvanti. Rajvanti. Is Rajvanti present? Hello. Is Rajvanti present? Hello. Am I audible? Is Rajvanti Yes, ma'am. present? Who is Rajvanti? रुपिंदर मैम अपने को अनम्यूट कीजिएगा. रुपिंदर मैम म्यूट हो गए हैं. Is Rajvanti present? आवाज नहीं आ रही. Rajvanti is present. Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is Rajvanti present? Okay. I call upon Shruti from team 8. Yes, ma'am, you are audible. I call upon Shruti from team 8. Is she present? Shruti from team 8. Teacher in charges, kindly keep a record of the students जिनका नाम लिया जा रहा है and they are not responding. Yes, ma'am. Shruti from team 8. Yes, you're present. Yes, your situation is your friend is going abroad. Your friend is going abroad. धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना. I would sing this for my friend. Who is going abroad? Can I? No, until and unless your name is not called upon. Okay, from team 7. Team 7, we have Priyanka Hutta. Yes, ma'am. Team 7, Priyanka Hutta. Okay, so your situation is there is some party regarding a wedding party, a wedding reception party, and you're very much happy. 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 And you're very mu
हैप्पी Yes. आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. Okay. Okay. Now I call upon from team 1. I call Garima Singh. Garima Singh from team 1. Is Garima Singh present? Yes, ma'am. Okay. Your situation is आपको शादी में इनवाइट किया गया है and it is somebody's wedding whom you liked. तो सिचुएशन में ये सॉन्ग गाइए. देखा तेनू पहली पहली बार में होने लगा दिल बेकरार में, हाय रब्बा की करा वे सोहणिया, हाय रब्बा की मैं करा. Okay, next we have from team 2, Tanishq from team 2. Your situation is you had a recent fight with your brother at home and you are not in a good mood. You are in an angry mood. Okay, that's quite tricky though. You had a fight at home with your brother. मैम एक सेकंड, मेरा वो दिमाग में गाना आ रहा है बट वो आ नहीं रहा. एक मिनट. वो होता नहीं, बीच बीच में 2 वर्ड्स आ जाते हैं, आगे नहीं आता होता. आप कुछ भी गा लो फटाफट, टाइम हो रहा है. एक सेकंड. It's not exact the same situation, but मतलब song उसका नहीं है, but I'm gonna mold it a bit, okay? उड़ती मेरी छींट दी दुपट्टा मेरा लहरिया, लड़न कनो जाने बेमां दे आ जाया, जा मां दियां जुतियां खा, सुन भरावा वे, ਜਾਂਦਾ ਹੀ तेरे नाल साडा भोला ਓਏ. Just mold it a bit. Okay. Next, I call upon from team 7, Akansha Puri. Akansha Puri from team 7. Yes, ma'am. Good afternoon, one and all present over here. Yes. आपको सिचुएशन दी गई है कि आपका कॉलेज का ट्रिप आप जाने वाले हो. पहले आपको मना कर दिया गया था बाय योर पेरेंट्स. इमीडिएटली पेरेंट्स ने कह दिया ओके यू कैन गो फॉर द ट्रिप. व्हाट सॉन्ग विल यू सिंग? यही मैम, आज मैं ऊपर आसमान से. Repeat. मैं आगे. Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Repetition will not be covered. We are just going to look. Yes, we are just going to look into the aptness of the relevance of the song as per the situation. Yes, Amanpreet ma'am, you were saying something. Ma'am, sorry to interrupt. अभी इसी थीम पे ना गाना था, बहुत देखिए मैं बोल दूं. बहुत अच्छा, बोलिए नहीं मैम, गाइए. आज मैं खुश हूँ तो तुम ही बोलो मैं हूँ खुश क्यों, जल्दी जल्दी बोलो चलो, साथ चल रहे हैं तो इसलिए मैं भी खुश हूँ, बात यही है ना, चलो. Thank you, ma'am. That was wonderful and very apt. Okay, next I call upon from team 1, Ekam. Ekam, is Ekam present? Yes, ma'am. Yes. Ekam,
आपकी सिचुएशन है वीजा आ गया कनाडा का। ठीक है, ओके ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ Song ਹੈਗਾ, ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਬੇਲਾ ਗੇਤ ਕੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਦੇ, ਆ ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਬੇਲਾ ਗੇਤ ਕੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਦੇ, ਆਕੇ ਸੁਕਾ ਚਨਾਰਨੀ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਈ ਦੇ, ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਬੇਲਾ ਗੇਤ ਕੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। Okay. Team two, we have Parneet Kaur. I suppose she's Parneet Kaur. Yes, ma'am. Parneet, are you present from team two? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. आपका सिचुएशन है आपकी तैयारी नहीं हुई है एग्जाम की, पर आपको जाना पड़ रहा है और आप बहुत टेंशन। Okay. नैना लगिया बारिशां ते सुके सुके सपने विच गए, नैना लगिया बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी, नैना लगिया बारिशां हल्लू डिगदे ने चोट लगे दिल ते, नैना लगिया बारिशां रुत मेरे हर बदला दी। Beautiful, beautiful. Wonderful. That was melodious. Yeah. Next, I call upon Excuse me, ma'am. from team 4. Yes, yes, please go ahead. Who's that? मैम वो सिचुएशन जो थी मेरी की इंटरव्यू मतलब के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी बट इंटरव्यू हो नहीं पाया, तो मैं अभी गा सकती हूँ एक्चुअली आ गया था। हाँ जी, टेक्निकल के लिए नहीं, आपको 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 नया थीम मिलेगा मैम, नया थीम दीजिए ना। हाँ, नया ही दूंगी मैम, नया ही दूंगी। टीम 4 से हरनाज फिल। ओके, योर सिचुएशन इज आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है। ओके ओके। सारा कुछ ही नहीं विले रब वल्लों मिलना, बड़ा कुछ जिंदगी च आप पैना करना, तकदीर दी की जरूरत हरा जवे, तकदीर दी की जरूरत हरा जवे, मसला जे बन जे लड़ाकू वे, सारा जग जितना है मैं देख ली फिर कदमां च रखू बेबे बापू दे। थैंक यू। Okay, very good. Okay, so next from team 6, I call upon Mohammed Hisham. Mohammed Hisham. Yes, ma'am. हाँ जी, मोहम्मद हिशम, आपका सिचुएशन है, you have to sing, if given a chance, to sing for one of your closest bond. किसी एक अच्छे सबसे क्लोज रिश्ते ਲਈ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ Song ਤੇ Song ਕਿਹੜਾ? वैसे तो मैम एक्चुअली मैं ज्यादा सॉन्ग्स नहीं सुनता, लेकिन मतलब सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे याद नहीं रहते। अगर मुझे एक क्लोजेस्ट सिस्टर के लिए गाना हो तो ऑब्वियसली मैं अपने मदर के लिए गाऊंगा या फिर मैं अपने ब्रदर के लिए गाऊंगा, बट उसके लिए मेरे पास सॉन्ग नहीं है। हाँ, मैं एक अपने किसी और क्लोजेस्ट के लिए गा सकता हूँ, लाइक देयर इज अ सॉन्ग फॉर अ फीमेल फ्रेंड। क्या मैं वो गा सकता हूँ? अभी मेरे दिमाग में वो चल रहा है। जी, प्लीज गो अहेड। Sorry for that, but because मुझे एकदम याद नहीं रहते गाने में, सुनता हूँ मुझे मतलब एग्जैक्ट टाइम पर नहीं। चलो कोई बात, मैं गाता। आपके पास 1 ही मिनट है। हाँ, तो बोला हे वो मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। मैं बोला हे वो आए तो दिल के राज सुनाए तो सपनों में मैं बह जाऊंगा उसको रोको। और तुम मैं भूल गया आगे। That's fine. From team 8, Chahat. Chahat from team 8. Yes, ma'am.
Yes, Chahat, your situation is आपने आपने पूरा सोचा था कि आप यूनिवर्सिटी टॉप करोगे विद 95% मार्क्स, पर यूनिवर्सिटी टॉप नहीं कर पाए क्योंकि जिन्होंने टॉप किया है वो 95.1% मार्क्स के साथ हुए. So with only 0.1 difference in that situation, आप खुश हो कि रोओगे? Song. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I will sing. एक किशोर कुमार जी का गाना इस सिचुएशन में बिल्कुल सही बैठता है. वो है रुक जाना नहीं तू कहीं, तू यूं ही हार के कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बहार के. थैंक यू मैम. मुझे इतना ही आता है, बस लिरिक्स याद नहीं है अभी मुझे पूरे. It's very beautiful song. Very beautiful. From team 6, I call upon Abhay. Abhay from team Yes, ma'am. 6. Is Abhay Good present afternoon, from team 6? Yes, ma'am. Yes. Your situation is friends are. Yes, ma'am. Situation is आप लॉन्ग ड्राइव पे जाके पढ़े के साथ. मैम इसके लिए एक गाना है मैम, ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी. मैम इतना ही आता है, आगे एक लाइन ही पता थी इसकी वजह से. Okay. I call upon from team 4. Team 4, Nisha. Yes, ma'am. Nisha from team 4. Yes, ma'am. I'm Nisha. हेलो मैम, टीम नंबर 4 ਤੋਂ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ. ਮੈਂ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ. Okay, चलो फिर मैं पवनदीप सिंह ਤੁਹਾਨੂੰ रुक के बुला लेनी है. Right now I had called upon Nisha. Nisha आपका सिचुएशन है. निशा आपका सिचुएशन है कि आप अपनी स्कूटी राइड करके कॉलेज के लिए जा रहे हो और जल्दी पहुंचना है, बट आपकी स्कूटी पंचर हो गई. इन दैट केस अ सॉन्ग. आप बहुत टेंशन में हो, जल्दी जल्दी पहुंचना है, पर स्कूटी ने साथ छोड़ दिया. मैं गा रही हूँ बट मुझे मैं गाती हूँ. कलियां रह गईयां हाय नी तेरी यादां सैरियां तैनू की कहिए रोज थोड़ा थोड़ा मर रहियां कलियां रह गईयां. मैम कुछ भी कुछ भी. मैम मैं मैम थैंक यू मैम. मुझे अपने पे तो याद नहीं आया, अभी आया इस सिचुएशन पे. नहीं आए. आपको no second chance to anybody. Yes, from team 3 I call upon Anvi Jain from team 3. Am I audible? Yes, absolutely. Is Anvi speaking? Actually, yes, ma'am. Actually, there's a confusion, ma'am. I am from team 2, not 3. I don't know how. मेरे पास टीम 3 का नाम है. Anvi Jain is from team 3. Harbilas sir, this girl is from team 2. Sarjeet ma'am, can you please confirm if Anvi Jain is in your team? मैम शी इज इन माय टीम 2 में है. ओके, सर ने भी इनका नाम भेजा है. इसने भी गलत फॉर्म फिल किया था, बट शी इज इन टीम 2. Anvi Jain, kindly नेक्स्ट टाइम मिस्टेक मत करिएगा. राइट? ओके, फ्रॉम टीम 2. ओके Anvi, I'll ask you. Yes, ma'am. ओके. your situation is सबके सामने अचानक ही आपको बोल दिया जाए गाना गाने के लिए, तो इस सिचुएशन में आपको रोना आएगा, हंसना आएगा, क्या आएगा? In this situation, I would be
I would be like, I'm a little nervous actually. Just हाँ, one. नर्वसनेस में भी गा सकते हैं. नर्वसनेस में क्या गाना गाएंगे? थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी है ये जिंदगानी, अब हम क्या करें, हमारे सामने है एक दास्तां, इसे कैसे आगे बढ़े, ये दास्तां है मुश्किल, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, हम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. Thank you. अमन मैम, ऐसा कोई सॉन्ग एग्जिस्ट करता है? सीरियसली? मैम ये मैशअप है, गानों को मिक्स कर दिया. ये एक सॉन्ग नहीं है, दिस इज मैशअप. हाँ, वो मैंने ना 2 सॉन्ग्स को मिक्स कर दिया. Just because of nervousness, मैम, this happened. वो अपनी सिचुएशन को क्लियर कर दिया मैम. हम एंजॉय कर रहे हैं. ओके. टीम 1. Just hold on. Yes. From team 1, we have Ravina. Ravina from team 1. मैम मैम ने ये वापस लिया है नाम ना टीम 1 से. टीम 1 से टीम 1 से दलजीत टीम मैम. 1 नहीं, मैं टीम 1 से बात कर रही हूँ. ओके, ठीक है. टीम 1 Ravina. Is Ravina present? हेलो मैम. हाँ जी, रवीना. ओके. आपका हाँ जी, बोलिए. कौन बोल रहा है? मैम मैं राजवंती बोल रही हूँ मैम. मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम करके ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं सी सुन रही जी पहला. कोई गल नहीं राजवंती, इस तो बात तैयार रहे हो. ओके मैम. ठीक है. Is Ravina present from team 1? मैम. यस मैम. Okay. Your situation is आप मेकअप करवाने गए थे पार्लर पर, दैट द पर्सन कंसर्न्ड पर्सन ने आपका मेकअप खराब कर दिया. मैम सिचुएशंस बहुत अच्छी ढूंढी है आपने ना. मैम आई डोंट नो, ये सब स्पॉन्टेनियस ही आ रहा है. हाँ जी, आपको गुस्सा आएगा या आप इजीली सुन के ले सिचुएशन भी लोगे जो मेरे उन्होंने मतलब किया? हाँ जी रवीना. मैम अपनी सिचुएशन भी वैसे मेरे नेचर के मतलब अगेंस्ट दे दी, क्योंकि मेरे को मेकअप करवाना पसंद भी नहीं है थोड़ा. ओके. तो अगर उन्होंने खराब कर दिया तो गलती से हुआ होगा. तो आप एक्सेप्ट कर लोगे. सिचुएशन पे गाना कौन सा गाओगे? मैम ये अगर मैं गाना गाऊं तो मैं ये गाऊंगी कि हाँ जी कोई क्योंकि नहीं, मैम ठंडी हो सिचुएशन जाएगी. ऐसी है, सिचुएशन ऐसे यहाँ पे हम ना तो मैं पूरी तरह से खुश हो सकती हूँ ना दुखी हो सकती हूँ. ठीक है, तो ये गाना मैं गा सकती हूँ कि खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेवफा. ये मैम ये गाना गाऊंगी मैं. ओके. फ्रॉम टीम 5, दिलबाग कौर फ्रॉम टीम 5. दिलबाग कौर फ्रॉम टीम 5. ओके. आपकी सिचुएशन है बेटा, आपने अपनी फ्रेंड को एक किताब दी थी और पढ़ने के लिए. अब आपका एग्जाम है, आप वो किताब वापस मांग रही है पर उन्होंने गुम कर दी. हाँ जी. हाँ जी दिलबाग. हाँ जी मैम. हाँ जी, आपको सिचुएशन क्लियर है? मेरा साथ मैम नहीं हम. मैम
Okay. मैं try करूँ? Ma'am, may I sing on her behalf? Teacher in charge kindly. Okay, please. Teacher in charge kindly see to it. This Dilbag Kaur ने अपना नाम बस ले लिया. She May I cannot sing perform. it? I give the same okay. I give the same situation to Pavandeep Singh. Pavandeep Singh, आप रह गए थे? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम कौन सा गाना? पवनदीप सिंह आपके हेलो जी पवनदीप मैम। सिंह, हाँ जी पवनदीप सिंह बोल रहे हो? जी मैम जी। हाँ जी, आपकी सिचुएशन है कि आपके दोस्त ने आपकी जो बहुत जरूरी बुक है वो गुम कर दी है। जी जी। जिसका एग्जाम है कल। हाँ जी, गाना गाइए। उस पे गाना गाना कोई? हाँ जी। आप नाच सकते हैं। शीशा टूटे ते तड़ तड़ होवे, ए पत्थर टूटे बुलावे, तारा टूटे आसमान दी हिक चौं जख्म जिहा कर जावे, पर ये चंद्रा दिल जद भी टुटिया ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। मैंने बुक नहीं दी तो मेरा दिल टूट गया जी फिर। मतलब उसको कैसे भी करके रिलेट कर दो। Okay. Next from yes आवाज बहुत अच्छी थी। Next is from team 7 Rishika from team 7. Rishika, are you present? Rishika? Hello? Rupinder ma'am, can you hear me? रुपिंदर मैम कोई प्रॉब्लम आ रही है रुपिंदर मैम के इस पे? मैम नेटवर्क का कुछ इशू आया मैम के ऑन से, मैं एक बार बात करती हूँ। हाँ जी। Yes, Rishika, you're audible. मैम रुपिंदर मैम आप आ गए? हेलो, हाँ जी मोनिका मैम मेरी आवाज सुन रही है? हेलो सुन रही है मोनिका मैम। मैम? हाँ जी जी ओके। Rishika, is Rishika present from team 7?
Yes, ma'am. हाँ जी ऋषिका your situation is आपको बहुत सारी unwanted calls आ गई and you're pissed off right now. गाना गाइए situation पे. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये ना पूछो. Thank you, ma'am. Hello, Monita ma'am. Okay, by the time she speaks, somebody. Okay, from team 1, I call upon Sumanpreet. Sumanpreet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Sumanpreet. Your situation is कि आप अपने टीचर से बहुत ज्यादा डरते हो और आज किसी आपके मम्मा ने कहा कि आज उनके साथ मिलना है आपको, ठीक है, उनको बाहर कॉफी के लिए लेके जाना है. सिचुएशन मैम रिपीट करना प्लीज. आप किसी एक अपने टीचर से बहुत ज्यादा डरते हो और आपको उनको कॉफी के लिए लेकर जाना है. आपको ये कहा गया है बाय योर मदर. हाँ जी सिचुएशन पे आप गाना गाइए. ओके मैम, 1 सेकेंड. सुमन बस 1 सेकंड लेना प्लीज. ओके ओके मैम. मोनिता मैम आप मुझे टाइम बता दीजिए. मैम दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा कह रही हूँ कि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है. अभी हमें जितेंद्र मैम का लेक्चर चाहिए. ओके, हम ऐसे करते हैं कि we'll take a break, फिर बाद में देख लेंगे. मैम फिर कंपटीशन भी है ना. ओके. That's why I'm saying. Yes, sir. मैम आप. हाँ जी सुमनप्रीत. हाँ जी मैम मैं गाऊं. हाँ जी ओके ओके. मेरी वॉइस क्लियर है मैम. हाँ जी ओके ओके. माए नी माए तेनू की समझावा, मैडम नू कॉफी ते किद्दां लेके जावा, मैडम तो डर मैनू लगदा है बाला, माए. थैंक यू वेरी मच. इट्स टू मच. आपको कुछ ज्यादा डर लगता है मेरे को मैडम से. Okay, Monica ma'am, you can take over. Thank you very much, ma'am. Now I request Aman ma'am to proceed further. Ji. Thank you, Rupinda ma'am. It was such a beautiful and very enjoyable session you had. Now it's time for a lecture from Professor Jitinder Kaur. Her topic is culture and art. So I don't take much time. I will invite Ma'am Jitinder Kaur. Please carry on. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. हर शाख सजी करुंगला नाल, खबरे चढ़दे पत्तियां ने मुड़ जामा नवा पाया, मौसम बदले रंग बदले रुख उंजदा उंज ही रहा. A very pleasant afternoon to one and all. Dear students, I hope all of you are having your pen and notebooks with you right now. Yes, ma'am. Then before I start the lecture,
please keep yourself mute. Before I start the lecture, there is a small activity for you. You need to draw a square, but in at least 3 different patterns. You need to draw a square in 3 different patterns. Ma'am, square? Yes. Ma'am, square or skull? Square. Square, okay. You are having only 60 seconds to draw. And draw big enough so that you can see on your screen. Done, Ma'am, I ma'am. have made. Ma'am, it's done. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I would like to see Rishabh one by one. Ma'am. My screen info. This is not the pattern. This is just 3 squares. We need not draw the 3 squares. We need different patterns. Can I? Yes, please. Ma'am, here it is. Ma'am, here it is. Shivani, team 2. Yes, Shivani, please turn on your screen and show your squares. Okay. Ma'am, it is already turned on. There are 3 patterns. The third one is not a square. Okay. Ma'am, it is on the plane, like in an XY plane, in 3D form. ठीक है. Ma'am, these are the squares. If you can draw more than 3. Ma'am? Yes. May I? Yes, please. This one. Yes, can see. Keep it up. Ma'am, can you see my squares? Ma'am, I'm on team 5. Ma'am. Okay. One member from team 1. Ma'am. Okay. Ma'am, can you see my? Ma'am. Yes, Pushpinda. Cube is not allowed. Ma'am, Square Sharma. cube is not allowed. 2. Ma'am, can you see my Ma'am, this are team squares? 6 Anchal. Okay. Ma'am, can you see mine? Ma'am, can you see mine? You see It's ma'am? Rishabh from team 1. The one who has done, please keep your muted. Okay, fine. Thank you. Can you see mine? Ma'am. Ma'am, आप See, ma'am, आप you are mute हो. muted. Yes, I can see all of your shapes. There are some common patterns. One square, another in the form of a diagonal shape, another is in diamond shape, right? Can you think of something beyond that? Can you think of something beyond that? Ma'am, we can keep it in a 3D form. Like we can imagine it in 2 planes. No. We don't want 3D. We want only 2D. Ma'am, may I speak? Forwarded the page here, right? Now it's Okay. We can keep the square in a circle. We can keep the square enclosed in the circle. Enclosed in the circle. We are not going to use any other shape. We need to draw a square. Okay, Okay, ma'am. let's proceed further. Small square in a bigger one. Okay. Anyways, thank you so much, guys, for your participation and cooperation. And you draw squares in the best possible way that you can think of. Now, what's the definition of? Let's come back to the thing. Definition of square says that a square should have 4 lines, and all the lines should be of equal length. Right? Have anyone of you have drawn a square with a wavy lines? I have. Yes, ma'am. I have. Yes, ma'am. Gaurav, can you show, please? Okay, ma'am. Just a second. Like this, I was trying to draw it.
I'm not able to see. Yeah, that's really nice. This is what it is. Well done, Saurav. Yeah. Now, Thank you. there's one more question after this activity. When we draw the square, was there anything, have you thought for at least give 5-6 seconds to think that how we can draw a square in a different pattern? Square is Ma'am. of course square. No. I did, No, ma'am. you didn't. I thought that how can I draw it in different pattern, but I didn't get actually an idea. Ma'am, Right. only three patterns came in the mind. One is of kite, one is of simple square, and one is of another some any random shape. Yes. Yes, But ma'am. never, Same. no one of, except a few of them, except Saurabh and one more guy, I guess, they have drawn the square using either the stars or waves or something like that. This is what creativity is, and from creativity we get art, right? So let's move further. Let me share my screen with you. Yes, ma'am. So when we talk about art and culture, let's talk how we can define art. What are the functions of art? On your screen, you can see 4 functions, and one was a big in a bigger and bold font. Can you see what is that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Celebration of life. Celebration of life. Now only that person will skip whose name I am going to take. Asta Singh from Team 6. Asta Singh from Team 6. Can you please repeat the name? Asta Singh. Okay. I guess there's some network issue. Dipali from Team 5. Dipali, can you hear me? Okay. So when we talk about art, why do we use art? Why do we express ourselves not in simple way, but in a different way? An artist always tries to express himself or herself in a different way, because there's one thing that differentiates an artist from an ordinary person is the sensibility. An artist must have extra sensitivity. He should be exceptionally, phenomenally sensitive towards the things around him. And art in this way let him to express himself. Whatever influences his or her mind, artists let that thing come out in the form of art, right? So Yes. art, very few people in these days, many people are experiencing stress due to COVID or something else, but there are few people who are using art as a form of stress buster. They are utilizing their time and energy to combat with the tensions of the life. Many people, you must have seen, many poets also, if we look at their life, the ones who are having the largest pain in their life, their poetic depth is the higher one, right? So art is a stress buster. Art entertains us. You enjoy songs. Just now in the interactive session, your songs were quite entertaining. But at the same time, art also teaches us. Like a story that was narrated by yesterday, or anecdotes that were shared by Professor Mayank Gupta in the morning, they were quite instructive, entertaining at the same time, right? And one more thing, after the celebration of life, of course, when we are using art, either we are too happy or we are too sad. So we are celebrating our sorrows, we are celebrating our happiness, joys, and we express them in the form of art only, right? So in this way, combining all these qualities, art help us to understand, to identify who we are. I guess day before yesterday, you had an ice-breaking session. And over there, you all defined yourself in one single word, that
defines your quality, right? That was an artistic way to come up with your quality. So now I want a volunteer. I Anyone? would like I would like May to I would love to. May I? May I, ma'am? Team. May I? Any May I? person from team. First, announce your name. Announce your name. Rishabh. Manjeet Kaur. Anyone else than Rishabh? Manjeet. Yes. Nikita. I'm Manveer from T. Manveer. Manveer. Okay, Manveer. I have a question for you. Yes, ma'am. Who are you? One A sentence human answer, being. please. I'm a human being. That is your species. Try again. I'm an artist. That's your profession or your hobby. Can I answer that? I'm the soul, first of all. I'm You the are soul. soul. Soul is something philosophical concept. Who are you? Ma'am, basically we define ourselves by maybe our profession or we can say our species. These are the things to define us, basically. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, it- can I am having a wonderful sentence for this question. Okay, Shivani. I am, yes, ma'am. I am the art of God. You are the art of God. That's an art. Who are you? Yes, ma'am. That's just Ma'am, beautiful way ma'am, of being. Okay. ma'am, Because Ma'am, I would like we to answer just that. define us by ma'am, I different would things. like Ma'am, to answer that's that. how we define God. That's how we define God also. We define God by his actions or some like his actions and other things. We can't say Ma'am, what God but is exactly. but when we ask who are you, first what we say is I am Sakshi Punya. Okay, that's your name. But I am Sakshi Punya. That's who I am. Okay. Now let's come back. The purpose of asking this question. When I asked this question, you guys came up with different answer after my rejection of each and every answer that you gave. You gave your name. You gave your species. You can also talk about your religion. You can also talk about your country, nationality. All these attributes compile up to identity. But all these attributes that you have given me, they all are not coming from vacuum. They are coming from society which is having a culture. Each and every one of you is having a name that is given to you by your respective culture, right? Now, the pouring part starts, right? So, first activity that we have done with the squares, right? Now, over there, we were limited to only those identify patterns. One square, one kite shape, one diamond shape, right? We were limited to that. We were limited to that because somewhere we have just seen those things only. Those were the things which were defined by the tradition, which were defined by the definition, right? But some of you were creative enough, they find out some experiment. They experimented with tradition and they came up with a new shape. Shape was still the same square, but it was different from the traditional squares, right? But this doesn't mean that tradition restricts our thought. We should take in this way that tradition lays the base on the which we can create a superstructure, an ornamental building of imagination using creativity, right? And imagination again will come from your experience only. Whatever you have seen, whatever you have read, right? Or what you have experienced yourself, they all will come together and make you a creative person, and you cannot go beyond that. So that is the limitation of art. And that is why if we want to be a good artist, be it as painting, be it as music, be it writing poetry, be it story writing, anything, any form of art that you can think of, dance, theater,
any performing art, anything that you can think of, for that you need experience. You need knowledge. That should not be close one or small one, that should be large one. So the more you travel, the more you meet with people of your interest, the more knowledge you gain, right? So that is possible because you are living in a cultural society. We are not living alone. We are not living on moon. Single person, single individual cannot create anything, because if you have not seen anything, if you have not experienced anything, you cannot create. So that is why, in order to be a good writer, in order to be a good performer, in order to be a good painter, in order to be a good singer or lyricist, anything that you want to be, you need to widen up your experience, your knowledge. And that will come when you will interact, when you meet people, you talk to each other, right? So just like I would, so in this way, anything that you can thought of. Yesterday, Madam Bangera has given an impressive demonstration of non-verbal language, right? That language that we use on daily basis, but that is again an artistic form. We can be fooled by using the knowledge of body language to the other person. If we are nervous, but we are keeping our body language with practice in such a way that we don't appear to be nervous. In that way, we are using that art and skill, right? So in this way, coming to concluding this topic, we can say that culture and art together, they form our identity, right? Culture gives us tradition, our values, historical background, and art comes out when we are adding our creativity, our individual talent to it, right? So but unfortunately, art and culture these days are found at limited places only. We can find art forms in the in the museums. We can find art form in the historical sites, libraries, or like these events like youth leadership camp or youth festivals, right? Art has been limited, but in your daily life, do you wear traditional outfits? Any one of you will wear bhangra dress at home just for No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Why don't we use that attire at home? That's the traditional Punjabi attire. Because we no longer feel like it will be comfortable for us. And we are more influenced by Western culture. Ma'am, we live in a society and we like to follow the rules of society. Who made the rules of the society? Who changed them? And we people. We will change it. Okay. If we have changed, will tradition and culture also change? Yes, ma'am, indeed it will be. Time everything changes. It will take some time. Right. Okay. So art and culture, they are something which keep on changing with the change in the society. So if we are not adapting those changes, we will be the part of the history. Just like Latin and Sanskrit language, which were no more in use, they are the part of that language. Any queries? Excuse me, ma'am. Excuse beta. मैम जैसे आपने बोला कि संस्कृत बिल्कुल भी आजकल यूज में नहीं है बिकॉज इट इज नोबडी इज इंटरेस्टेड ऑल्सो बट इंटरेस्टेड है लेकिन जैसे कि इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जैसे इंग्लिश को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं Exactly my point, beta. Because we are not using it. It is we who are giving importance to one particular language and we are ignoring other language. It's not Yes, that ma'am. language is higher status and other languages of low status. No, it is what we are using, right? So if we are changing, so our language will change, so our culture will change, so will the traditions change. And if everything is changing, that will have an influence on art. Yes, ma'am. So for this, like in Punjab, Punjabi is compulsory.
Also in Delhi, Sanskrit is compulsory. So Sanskrit is a god's language. It is also studied in the foreign countries. We have report says कि उन्होंने ओम का जब मतलब उच्चारण किया तो there were cracks in the walls. Then why are Indians not following it? Like obviously we are the ones who will make the changes. We are the ones who will tell the people to bring it into the curriculum. But also everyone should say it, right, ma'am? We should Right. Right. It is difficult. Right, it is difficult. The thing is, Divya, that we are living in a world where we evaluate everything in terms of materialism, which is giving us benefit, right? If we will involve that if Sanskrit language is giving us some job opportunities, obviously everybody will embrace it, right? Sanskrit language has been limited to only religious scriptures. So much. Sadly, I was Sorry, just gonna sorry say to the same interrupt thing. you, ma'am. Yes, Tanishq. Ma'am, this is Amanpreet. Yes, Amanpreet, please go ahead. Ma'am, can we wind up this session? Sorry, ma'am. Yeah, sure, ma'am. Okay, thank you, ma'am. So one thing that I would like to conclude with is that if we want to promote, we want to preserve our art and culture, as Divya rightly has said, she has taken me to conclusion only, that we need to do certain things which will make our culture to rise. And there are some suggestions from my side that we can create high profile events just like youth festivals, but the frequency should be more. We should take up art and culture in such a way, we take along art and culture in such a way that it addresses the problems of the youth. We need to make certain lifestyle changes, and we need to take the art to the people so that they can again get connected with it. Be it as a musician or magician performing in a shopping mall, be it in a theater art form which is being performed in the garden. So if we want that our art and culture should survive, it is us who should make efforts to do so. Thank you very much. So in this way, by taking the art, we can grow individually, we can make our society grow, and at the same time, we can make our nation a better place to live in. Because art increases love, connects us. It's art that connects the different parts of India together. So on this note, I'll say goodbye to all of you. Thank you, Amanpreet. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Jitendra, ma'am. For sharing your views on such a wonderful topic, culture and art. This is need of the hour. I think we should all know our culture and we should all have efforts to save it and to preserve it. Thank you so much, ma'am. So now we will move forward to poetical recitation competition. We have names from each team. So I will announce the name for the student and he or she will have to recite the poem here, okay? So I would like to have permission from the judges. Madam Rupinder. Yes, ma'am, please go ahead. Please go ahead. Okay, okay, okay. And Hardeep ma'am, are you there? Are you ready? Should we start? Moita ma'am is also there. Okay, ma'am. Yes, And ma'am. Hardeep ma'am? Join किया है Hardeep ma'am. Hello. Yes. Okay, so we are going to start poem recitation competition. For judgment, first participant is from team number 1, Ravina. From team number 1, Ravina is the Yes, first ma'am. participant. Okay. हाँ जी रवीना बेटा start कीजिए. ओके मैम. सभी गुरुजनों को और मेरे विद्यार्थी साथियों को नमस्कार. मैं रवीना DAV महाविद्यालय अबोहर से MA हिंदी की छात्रा हूँ.
और आपके सम्मुख एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है वो अनमोल सा रिश्ता है पिता का। तो ये कविता मेरे द्वारा ही लिखित है। अपनी कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि ख्याल अलग है मेरे कुछ, ख्याल अलग है मेरे कुछ, रिश्ते मजबूरी के नहीं दिल के अच्छे लगते हैं। ख्याल अलग है मेरे कुछ, रिश्ते मजबूरी के नहीं दिल के अच्छे लगते हैं। ताउम्र साथ चले वही संबंध अच्छे लगते हैं। न लालच पैसों का न शोहरत का, न लालच पैसों का न शोहरत का, निभाए जो भी दिल से इसे वही शख्स अच्छे लगते हैं, वही शख्स अच्छे लगते हैं। और एक ऐसे ही शख्स की भूमिका अदा हमारे पिताजी करते हैं। उनको संबोधन करते हुए मैंने ये कविता लिखी है जो इस प्रकार है कि वो अनमोल सा रिश्ता है पिता का, वो अनमोल सा रिश्ता है पिता का, मूल्य लगाना जिसका मुश्किल है। नाम मिला पहचान मिली, नाम मिला पहचान मिली जिससे हमें, वो खूबसूरत सा तोहफा है पिता। जी रहे हैं हम जिस सहारे, वो सांसें देने वाला है पिता। वो अनमोल सा रिश्ता है पिता का, मूल्य लगाना जिसका मुश्किल है। वो उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने, कांधे पर बिठाकर गांव घुमाया जिसने, रहने को सुरक्षित छत दी जिसने, ऐ खुदा वो ईश्वर सा ही रूप है पिता। वो अनमोल सा रिश्ता है पिता का, मूल्य लगाना जिसका मुश्किल है। कभी हम भटके तो रास्ता दिखाने वाले, कभी हम भटके तो रास्ता दिखाने वाले, अगर गलत काम किया तो टोकने वाले, कभी जो मुसीबत आई तो साथ देने वाले, अगर हारने लगे हौसला तो हिम्मत देने वाले। ऐ दोस्त वो दोस्त सा ही रूप है पिता, वो अनमोल सा रिश्ता है पिता का, मूल्य लगाना जिसका मुश्किल है, मूल्य लगाना जिसका मुश्किल है। खुदा का दूसरा रूप है पिता, खुदा का दूसरा रूप है पिता, खुदा के समान रुतबा है पिता का। आसान है हर काम जब साथ साया हो पिता का, आसान है हर काम जब साथ साया हो पिता का। कदमों में जहान है हाथ सर पर हो पिता का, कदमों में जहान है हाथ सर पर हो पिता का। सब कहते हैं इसीलिए ना हस्ती है ना ठिकाना है, ना हस्ती है ना ठिकाना है, बिना पिता के आना है और जाना है। हमें नाम पिता के, हमें नाम पिता के, हमें नाम पिता के। धन्यवाद। थैंक यू रवीना। सो हम रवीना को सुन रहे थे अभी टीम नंबर 1 से। इसके बाद सेकंड पार्टिसिपेंट है नैन्सी फ्रॉम टीम नंबर 1। नेक्स्ट Yes, फ्रॉम टीम नंबर 1 बी रेडी। हाँ जी। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बॉर्डर पर हमारे देश के साथ बाकी देशों के काफी तनाव चल रहे हैं। इस तनावपूर्ण सिचुएशन में भी अगर आप चाहें तो जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस हुए, ये लोग सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ये लोग एक विचारधारा है जो हम सभी के अंदर जीवित है। तो आज मैं यही सभी विचारधाराओं को आप सभी के अंदर सुप्त विचारधाराओं को आहूत करती हूँ और आप सभी को आह्वान करूंगी कि इस कविता के माध्यम से मैं आप सभी को जगाऊं और आपका इस भारतीय मिट्टी के साथ संबंध आप सभी को समझाऊं। मेरी कविता का शीर्षक है हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आई हूँ। यह कविता श्री आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे है, हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत की माता तुमको पुकार रही। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रंग के कण कण टहनी व राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। के खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, के खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला पहने जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। परशुराम का परशु जागे, यदुनंदन का बाण जगे, रघुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। दक्षिण वाले जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट बैठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे,
2 दिन जिया शेर के माफिक वह टीपू सुल्तान जगे, कनवाहे का जगे मोर्चा, जगे झांसी की वह रानी, जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु के प्राण जगे, और महात्मा गांधी का सत्य और बलिदान जगे। कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन को सर पर बांधकर सातों भंवर वह घूम गया, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे। तो झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, तो जो भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो, खड़ी शत्रु की दुल्हन कुमारी कोई ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द उसे अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। आज बंधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, आज बंधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, अरे चाओ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, के रथ से बनता है रण का केसरिया बाणा, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना, भारत के झंडे की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे फिर बामी से पनवाला, फिर चाहे रावल पिंडी हो या फिर हो पैकिंग वाला, इस भारत की मिट्टी से जो भी टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर देश में हर घर में भारत के संबंध की आग जलाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जय हिंद जय भारत। अंत में यह कहना चाहूंगी कि मैं नहीं मानती कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही झंडा लहराने से हम एक सच्चे भारतीय होते हैं। यदि दिल में देश प्रेम का जज्बा हो और हमेशा हम एक संबंध याद रखें कि भारत और भारतीय की मिट्टी का एक संबंध और अटूट रिश्ता है, तो रोज ही इंडिपेंडेंस डे है और रोज ही रिपब्लिक डे है। धन्यवाद। आई वुड इंटरप्ट, बेटा जो भी आ रहा है स्टेज पे वो प्लीज टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें। आप जब यहाँ बोलना शुरू कर रहे हैं उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जा रहा है वहां से, सो टाइम का बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी बात, आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है बेटा, एलोकेशन का टॉपिक आपके लिए अनाउंस होगा इसी बीच में, तो प्लीज जुड़े रहें साथ में, ये ना हो आप अपनी मीटिंग छोड़ के निकल जाएं। तो एलोकेशन का जो आज का अपना कंपटीशन है, आपने आज उसकी एंट्रीज दे देनी है, वो टॉपिक आपको यहीं पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप बने रहेंगे, आपको चैट बॉक्स में भी मिलेगा और उस पे भी। एक और अनाउंसमेंट ये है कि फेसबुक पेज जो लिंक है प्लीज उसको आप लाइक कीजिए, वो आपके ग्रुप्स में आपके साथ में सर्कुलेट हो रहा है। I request Sarabjit ma'am to share that link in this here in chat box also. So please continue, Aman ma'am. Sorry. Next is Kirandeep Kaur from team number 1. इसके बाद टीम नंबर 2 से गौरव रेडी रहेंगे। किरणदीप, आर यू देयर बेटा? टीम नंबर 1। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, शुरू कीजिए। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਸੋਂ ਪਾਸੋਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਏ ਮੇਰੀ ਸੋਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਪਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਆਵਣ,
क्यों दुनिया सानू फिर भी गर्भ च मारे सोचो विचारो मुद्दे ए लोको इन्हां गल्लां ते लाओ ना लारे जन्म वेले ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਅੰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਣੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਗੌਰਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਵਿਆ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਸਰ ਆਡੀਬਲ Yes. Team 2 ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ GH ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰਸਰ ਸੁਧਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਨਿਰਮਿਤ ਕਵਿਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪ ਸਮਾਏ ਹਨ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਖੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਰੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਪਾਜਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾਪਨ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਗੇਰੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆਬਰੂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ Am I audible, ma'am? Hello? Yes, you're audible. नमस्कार श्रोतागण, मैं शिवानी जीसीजी लुधियाना टीम 2 से आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता नश्वर नशा लेकर प्रस्तुत हूँ। रिश्तों से दूरी थी। शिवानी आपकी आवाज बहुत कम है बेटा। You're not audible, Shivani. Sorry for interruption. You're not audible. शिवानी आपको स्पीकर के नजदीक या तो बैठकर ही बोलना पड़ेगा
इतनी दूर से आपकी आवाज नहीं आ रही। Is it okay now, ma'am? Yes, yes, absolutely. Go ahead. Hello? Okay, बेटा start करो. Go ahead. Okay, ma'am. कुछ रिश्तों से दूरी थी, कुछ रिश्तों से दूरी थी, कुछ जिंदगी अधूरी, कुछ अपने ही रूठे थे, कुछ सपने भी टूटे थे। सो पकड़ लिया नशे का दामन, छोड़ दिया खुशियों का आंगन। पहले पहले मुझे जन्नत दिखी, लगा कोई नई चीज सीखी, पर धीरे धीरे फंस गया जंजाल में। शायद नशा आया था दोस्त की खाल में। चीखा चिल्लाया कमरे के बाजार में, सबने ही दुआएं मांगी मंदिर और मजार में, पर धंसता गया उस दलदल में, झूलता गया उस हलचल में। जब अंत समय आया तो एक सबक सा को लगता हूँ, वो नशे की आदत थी जो कभी जलता हूँ कभी बुझता हूँ। खुद ना समझा सो समझाने आया हूँ, बस इतना जानो कि एक ना समझ साया हूँ। अपनी दवाई हम नहीं, पर टूट गया वो आशियाना जो था मैं, जो भी कम हो सकता था अपनत्व कम नहीं। ये नशा है, ये नशा है मेरे दोस्तों, जो अधेरालय तक सीमित है। मौत ये सबको देता है और ऐसे ही ये उम्मीदें तो लाखों हैं, उम्मीदें तो लाखों हैं। रोशन करने को एक लौ चाहिए, कि बूझते उस अंधे कुएं में दोस्तों कभी ही मत जाइए। ऐसे ना रूपी रावण का, और लाएंगे हम फिर से वो गंगा जल सी के आशियाने को। नश्वर नशाकम जड़ नाश न टूटे हम विश्वास, ताकत है अंधेरे रोशनी, रोशनी फिर से लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। So this was Shivani. Now Ma'am. Divya will come for her poem. Divya from Ma'am. team number 2. Yes, Anji. ma'am. I'm sorry for the interruption, but today's data is exhausted. So how can we present our poem? Kindly repeat. Ma'am, actually today's data is exhausted on mobile phone. So how can we present now? Rupinder ma'am, I'm Hello, not getting hello, her. Anji. hello. Who's that? Can I have a name of the student? It is Amanpreet from team number 5. Amanpreet. You Amandeep, have Amandeep. From Amandeep. team Amandeep from team number 5. What's your query? What's your query? Ma'am, my query is that today's data is exhausted on my mobile phone. So how can I present my See, poem recitation is certainly not reading it, reading from a paper. Poem recitation is something you recite from by rote, right? So kindly, nothing is to be read out. Poem recitation is you recite it by you people had to memorize the thing. There's nothing like paper reading. If you had my gone question through was more like that. Ma'am, yes, I understand you, but the data exhausted. Yes, yes, ma'am. Ma'am, data The limit for एक्चुअली शी वांट्स टू से कि उसका नेट खत्म हो चुका है। हेलो हो चुका है फोन में। हाँ जी, सुनिए पहले दिव्या मैम, she is able to say it right now if she should be given the chance right now. Okay ma'am. Okay. Yeah.
I request there's one announcement for each and every student. The announcement is specially for these students. Teacher in charges, kindly note these names. Shreya, Anupreet, there was Saransh. Then there is a student named Parnav Preet. Then there is a student whose name is Aarti, Ishika, Navjot, Harleen Kaur. Then Gagandeep, Jaspreet Kaur, Khushbu Verma, Anmol, Nisha Rani Priyanka, Manpreet Kamboj, Arshvinder, Ekam. These are a few students who had been responding in the chat box. And I hope you people had gone through certain, guidelines which we had already, said it in the previous meetings as well, right? That you people are not supposed to write anything in the chat box because some, important things does miss out. Yeah? So kindly not write anything in the chat box. If you're going through any technical glitch, Shivani Singh, kindly stop. Kindly unmute yourself. If you people are going through any technical glitch, we had certainly told you in the guidelines that you're supposed to respond to your, concerned teacher in charge. You people are putting up in the chat boxes. You people are copying links and putting it in the chat boxes. I told you a number of times not to do that in the chat box. It is meant for certain instructions. And one more request. The students are asking for the change of platform. But this is the platform we are getting from गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज और हम लोग बहुत धन्यवादी हैं उनके लिए कि वो हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बिकॉज इसी की वजह से आप लोग कम से कम ये 250-300 जो हम लोग आपस में जुड़ पा रहे हैं वो सिर्फ यही वजह है. बाकी कुछ एक स्टूडेंट की ये भी दिक्कत आ रही है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे. बेटा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद हमारी इंटरेक्शंस बहुत अच्छी हो रही हैं. पर अगर आप इस लेवल पे अगर आप प्रॉब्लम्स की तरफ भी ध्यान देंगे या किसी और ने अगर इंटरेक्ट किया वहां से सीखेंगे नहीं तो मेरे को लगता है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. सो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे आप हमें ये सलाह देंगे कि आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं. बेटा प्लेटफॉर्म नहीं चेंज हो सकता बिकॉज इससे ज्यादा इस नंबर को हम यहीं पे मीट कर सकते हैं. गूगल मीटिंग और जूम मीटिंग इज नॉट पॉसिबल. मैम अमनप्रीत प्लीज आप कंटिन्यू करेंगे कंपटीशन के साथ. I request again, students kindly avoid writing anything in the chat box until and unless you are asked to do so, and kindly avoid copying the links and putting it up in the chat box again. You people have no authority to do that. Yeah, thank you so much. हाँ जी बेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई है ना, इनका ध्यान रखना आपने प्लीज, ठीक है? क्योंकि हमारा ये डेकोरम है, आपको पहले दिन ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए थे, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना. तो अभी फिर से हम पोएम रेसिटेशन की तरफ आते हैं. तो अमनदीप कौर फ्रॉम टीम नंबर 5 बेटा, आर यू रेडी? यस मैम. ओके, गो अहेड बेटा. मैम मे आई स्टार्ट? यस. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ. ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਰਖ ਵਾਲੀ ਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ
हवा बन के पैड़ां तेरियां ते दूर दूर तीक मेरे पत्ते पैड़ां तेरियां ते दूर दूर तीक मेरे पत्ते डिगे मेरियां बहारां दा गुनाह बन के कोई डालियां चों लंघिया हवा बन के पिया अंबियां नूं बूर सी के कोयल कूक पई पिया अंबियां नूं बूर सी के कोयल कूक पई किसे जिंद बियाबान दी गवाह बन के कोई डालियां चों लंघिया हवा बन के कदी बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर कदी बंदियां दे वांग सानू मिलिया भी कर ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ ਸਾਂਵਲਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ ਸਾਂਵਲਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਰਖ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ वेरी गुड अमन। अमन तो बाद में बुला रही हैं दिव्या फ्रॉम टीम नंबर 2। हाँ जी मैम। मैम am I visible and audible? यस बेटा। ओके मैम। रिश्ते अनेक लेकिन ना जाने क्यों उन्हें समझने में लग जाती है इतनी देर। नमस्कार, ग्रुप द्वितीय से मैं दिव्या आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो लिखी गई है श्रीमती विधि जी और श्रीमती कर्णिका अरोड़ा जी द्वारा, जिसका शीर्षक है अंतर। अंतर बस इतना सा था कि वो घाघरा चोली पहनी थी, लड़की शहर की रानी थी, वो बोली मीठी बोली थी कि घिटपिट अंग्रेजी जानी थी। वो इतराती शर्माती थी कि सूट बूट में आती थी, वो घाट का पानी पीती थी, मोटी पायल की छन छन थी, पहने उसने भी कंगन थे, पूरे गांव में उसका चर्चा था, छपता तो इनका भी पर्चा था। वो सबकी छैल छबीली थी, नखरीली थी, शर्मीली थी, ब्याह गई करके पूरे 16 श्रृंगार। नए घर का चूल्हा फूंका था, नए तौर तरीके सीखे थे, घर पे भी समय बिताती थी, दफ्तर रोजाना जाती थी, चेहरे पे उसके मुस्कान थी, कल से बिल्कुल अनजान थी, सास से थोड़ी अनबन थी, सास से थोड़ी अनबन थी, पति ना सुनता एक क्षण भी, गालियां कानों में पड़ती थी, वो झगड़ती थी, संभलती थी, वार को प्यार वो कहती थी, वार को प्यार वो कहती थी, कह के खुद को समझाती थी, घर पे भी पहल लगाई थी, समाज की भी धमकी लगवाई थी, उसे थप्पड़ 4 लगाए थे, उसे थप्पड़ 4 लगाए थे, घर से पैसे मंगवाए थे, वो नंगे पैर ही दौड़ी थी, उसके पैरों में बेड़ी थी, बिन इच्छा सारे काम हुए, क्रोधीवा उसके नाम हुए, तन पे जो घाव थे, मन में मरने के भाव थे, ताने कानों में बजते थे, ये लोग आप ही थे जो हंसते थे। बेटी मायके क्यों आई, इज्जत इसने गवाई है, थोड़ा समझौता कर लेती, गोद बच्चे से भर लेती, किसी की गलती रही होगी तो क्या हुआ, थोड़ी सी ही पी होगी, गुस्से में हाथ बात उठ ही जाता है, ऐसे घर लौट के कौन आता है। 1000 बार आवाज उठाई थी, 1000 बार आवाज उठाई थी, कटघरे तक लेके आई थी,
जिसके कंधों पे बोझ था, जिसका ना कोई सोचता, घुट घुट कर यूं जीती थी, आंसुओं का घुट वो पीती थी, हर श्रेणी में वो हारी थी। अंतर बेटी से कौन टक्का था, अंतर बेटी से कौन टक्का था। धन्यवाद। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਵਿਆ ਨੂੰ। ਦਿਵਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਟੀਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਹੀ ਰਮਨਦੀਪ ਦੈਨ ਸਤਨਾਮ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। Yes, ma'am. Am I audible? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲੂੰ ਜਦ ਕਿਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀੜਾਂ ਸਹਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੇ, ਮਾਂ ਰੋਗ ਲਵਾਏ ਲੱਖਾਂ ਤੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੈਨੀ ਏ ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਜਾਈ, ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਦਾਸ ਲਕੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਢੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you, Khushi. Next participant is Ramandeep from team number 3. Ramandeep, are you there, beta? Yes, ma'am. Okay. So, jaldi shuru karo bachche. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਝੇੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਨੀਰ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਜ਼ਾਰੀ। ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਪਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਪਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਮਾਏ ਝਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰ
अज मेरे कोलों अज मेरे कोल कच दा गलास टुटिया ते मैनू अमड़ी ने दित्तियां ने लख चिड़का ते मेरे नैना विचों लख चम चम नीर फुटिया ते मेरे नैना विचों सस्तियां इत्थे बहुत ज़मीरां महंगियां बहुत ज़मीरां सस्तियां इत्थे बहुत ज़मीरां महंगियां बहुत ले लो ज़मीरां इत्थे लाना पैना लहंगा रानी हार ते इत्थे सस्ता सदरा भरिया सीना लहंगा रानी हार सस्ता सदरा भरिया सीना दिल दा नेक न मिलदा कोई दिल दा नेक न मिलदा कोई सब मंगदे पश्मीना अज मेरे कोलों कच दा गलास टुटिया ते मैनू अमड़ी ने दित्तियां ने लख चिड़का ते मेरे नैना विचों छम छम नीर फुटिया ते मेरे नैना विचों Thank you, Ramandeep. So next participant is Satnam. Satnam from team number 3. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And Harleen from ma'am, team number 4. Be ready, beta. Ji, Satnam, start. Ma'am, am I audible as well as visible, ma'am? हाँ जी बेटा ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਲਈ ਇਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ BCM ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ B.Ed ਜਨਰਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੂਰ ਸੱਚਾ ਚੰਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਏ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਪੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਪੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਐਤਬਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਤਾਈਓ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰ ਸੱਚਾ ਖੋ ਵਲੇਵਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਢ ਸੱਚੀ ਪਿਓ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗਰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਸਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਬਗਾਨੀ ਮਾਰੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੀ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਧੋਖਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਗਰਮਾਹਟ ਮਿਲਦੀ ਓਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਗਰਮਾਹਟ ਮਿਲਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੁਰਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੁਰਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਚੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੁਰਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਚੀ ਤਰਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਓਏ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ Thank you, Satnam.
ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ 4 ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਲੀਨ। ਹਰਲੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਇਆ ਐਂਡ ਕਮਲਵੀਰ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਲੀਨ ਫਰॉम टीम नंबर 4। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा आ रही है, शुरू करो। ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੰਛੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪੜ ਉਡਾਰੀ ਉਜ਼ਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਉਜ਼ਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਚਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਰਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਹਰ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਧੁਨ ਹਵਾ ਦੀ ਚ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਧੁਨ ਹਵਾ ਦੀ ਚ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ, ਗਾ ਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਗਾ ਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੋੜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇੜੀਆਂ, ਤੋੜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਹ ਪਾਵਾਂ। ਬਿਨ ਡਰਿਆ ਮੈਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਡਰਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਅਜ਼ਮਤ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਉਜ਼ਲਤ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਲੀਨ। ਹਰਲੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਇਆ। ਅਨੁਸੂਇਆ फ्रॉम टीम नंबर 4। हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी बेटा स्टार्ट कीजिए। हाँ जी मैम, मेरी आज की पोएम है गुरु के पे। मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसे स्टार्ट करो बच्चे। रिश्तों की पहचान जरूरी हो गई है, रिश्तों की पहचान जरूरी हो गई है। मिले आप जैसे गुरु, मिले आप जैसे गुरु, तो मंजिल की उड़ान भरनी आसान हो गई है, तो मंजिल की उड़ान भरनी आसान हो गई है। किस्मत का उपहार कहूँ, किस्मत का उपहार कहूँ, या खुदा की करयामत इसे, या खुदा की करयामत इसे, पाकर गुरु रूपी दोस्त, पाकर गुरु रूपी दोस्त, मानो बहुत सी मुसीबतों का सामना हो गया, मानो बहुत सी मुसीबतों का सामना हो गया। सुना जितना उतना सोचा आपको, सुना जितना उतना ही सोचा आपको, सोचा जितना अधिक उससे भी पाया सच में, सोचा जितना अधिक उससे भी पाया आपको। खुदा ने अपृथिक ज्ञान का भंडार बनाया आपको, खुदा ने अपृथिक ज्ञान का भंडार बनाया आपको। गूंज उठी महफिल तालियों से, गूंज उठी महफिल तालियों से, वह आहट है आपके आने की, वह आहट है आपके आने की। सभा में जो रंग भर दे, सभा में जो रंग भर दे, वो वाणी इतनी काबिलियत है आपकी, वो वाणी इतनी काबिलियत है आपकी। बेझिझक जिससे बात कर लें, बेझिझक जिससे बात कर लें, वो दोस्त रूपी छवि है आपकी, वो दोस्त रूपी छवि है आपकी। अभियताओं का दिल जीत ले, अभियताओं का दिल जीत ले, वो पढ़ाने की कला है आपकी, वो पढ़ाने की कला है आपकी। बस
यही इबादत करते हैं, बस यही इबादत करते हैं। उत्तम सर्व का दान बख्शे आपसे, उत्तम सर्व का दान बख्शे। खुशियाँ मिले अपार आपको, खुशियाँ मिले अपार आपको। हर सफलता आपके कदम चूमे, हर सफलता आपके कदम चूमे, हर सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद। थैंक यू अनुसुईया। अनुसुईया तो बाद आ रहे ने कमलवीर, कमलवीर फ्रॉम टीम नंबर 4। इन्हां तो बाद टीम नंबर 5 तो रवीना, कमल, समृति तैयार रहणगे। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਮਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਸੁਖਾਨੰਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓਗੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੋਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਂਦ ਬਾਪੂ ਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਂਦ ਬਾਪੂ ਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਭਰਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਥੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਥੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ, ਝੋਲੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲਵੀਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਰਵੀਨਾ, ਕਮਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਵੀਨਾ, ਕਮਲ। ऑडिबल? हाँ जी रवीना। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी हाँ जी बेटा आ रही है। मेरा नाम प्रवीण कंवर, मैं दशमेश गर्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बादल ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਵਲੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤੀਆਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਪਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਕਣ ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ,
ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਚੂਰੀ ਪਾਵਣ ਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਕਣ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗਲ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਜਦ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੁੰਮਣ ਤੇਜ ਵਗਨ ਜ਼ਦ ਪਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜੋਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੋਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਬੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਅੰਚਲ ਤਿਆਰ ਹੈ Good afternoon, everyone. I am from Team 5, and I will be reciting a poem that is originally written by Gulzar Sahab, but I have rewritten it in my own style. So through this poem, I will be talking about my relationship with books. Hope everyone will be able to relate to it to some extent. है बंद अलमारी की शीशों से बड़ी हसरत से तकती है अब महीनों मुलाकातें नहीं होती हमें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बड़ी खास दोस्ती थी उनसे मेरी कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे कभी बाहों में लेते थे दामन के आशियाने में रखकर पढ़ते थे एग्जाम से पहले बहुत रुलाया इन्होंने मुझे पर इन्हीं किताबों ने किताबें करती थी बात बीते जमानों की दुनिया की इंसानों की कल की आज की एक एक पल की संदूक के किसी कोने में सिमट कर रहती है ज़बान पर जायका आता था जो एक पन्ना पलटने का अब फोन को क्लिक करके बस एक झपकी से गुजरती है दुनिया का सारा इल्म तो मिलता रहेगा आगे भी मगर वो जो किताबों में मिला करते थे महके हुए खत सूखे फूल किताबें गिरने उठाने मांगने इसके बहाने जो रिश्ते बनते थे ना जाने उनका क्या होगा That is it. Thank you so much, everyone. I hope you liked it. Okay, thank you, Smriti. Smriti, will you switch on your camera, beta? Realized my camera was off all along. Yes, your camera was off. I thought I am be extremely technical problem के कारण है. No, Okay, my I choice, just my wanted to camera see you. Okay, okay, that's okay, beta, no problem. Now I would like to invite Anchal from team number 8.
यस मैम। नमस्कार। नमस्कार, मैं आंचल टीम 8 की सदस्य जीएचजी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ फॉर वुमेन सिद्धवा खुर्द लुधियाना की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष निशा रानी द्वारा रचित कविता पिता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपा कर मुझे आज्ञा दें। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माता ने, जानेगा जग जिससे वो पहचान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला घुमाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर मेरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर मासूम सी लोरी है तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता जिससे घर वो राशन है पिता। कभी ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी है तो कभी आंसुओं में छिपी हुई वो लाचारी है। माँ तो बेच देती है जरूरत पर अपने गहने, जो अपने आप को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी और कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेत इस आसमान सा खुला है फिर पिता। धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ Yes, जी ma'am. आंचल, ओके, थैंक यू आंचल, थैंक यू सो मच बेटा। आंचल Thank के you. बाद मैं इनवाइट करूंगी टीम नंबर 6 से सिमरन सिंह, उनके बाद शालिनी, देन आफ्टर दिलप्रीत कौर। ये तीनों बच्चे तैयार हैं। सिमरन सिंह फ्रॉम टीम नंबर 6। मैं ऑडिबल? हाँ जी सिमरन। सत श्री अकाल जी, मैं सिमरन सिंह एससीटी गवर्नमेंट ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਟੀਮ 6 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਦਮ ਦਮ ਖੈਰ ਮਨਾਵਣ ਦੇਵਣ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਤਪਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਤਲ ਛਾਵਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਚ ਲੁਕਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਚ ਲੁਕਿਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ, ਕਵੀ ਨੇ 3 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਲ ਗੋਦ ਖਿਡਾਵੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਂਦੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਵੇ। ਭਰ ਭਰ ਖੇੜੇ ਮਹਿਕਾਂ ਮੇਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਵੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤ ਜਗਾਵੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਟੱਪੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵੇ। ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਹਰ ਉਛਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੌਕੇ ਹੰਝੂ ਹਾਵੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਔਦ ਹੰਡਾਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਕਤੀ ਵਕਤੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਕਤੀ ਵਕਤੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦਿਓ ਸੀਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੀ ਭੀੜ ਚ ਰਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੀ ਭੀੜ ਚ ਰਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਸਲੋਂ ਸੁੱਚੇ ਸਾਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਸੱਚ ਨਿਭਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਫੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਫੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂ। ਸੁੱਚੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।
Attention, please. हाँ जी. जी. Dear participants, please bear with us. We have left with some participants for जो shortlisted entries हैं. So please हम चाहेंगे कि आप लोग चाहते हो कि हमारी इंटरेक्शन हो, हमारा ये थोड़ा सा अगर टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू करें, हमें थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करें इस चीज को लेके, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जो है यहाँ काम होती जा रही है. आई वांट कि आप लोग ज्वाइन रहें, तभी हम लोगों को सबको हौसला रहेगा. जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है इस चीज से. थैंक यू वेरी मच. यू कैन कंटिन्यू अमनप्रीत मैम. हाँ जी, थैंक यू मानिता मैम. ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਟੀਮ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ. और बेटा कोशिश करो कि ज्यादा तुसी इंट्रोडक्शन ना दो, ठीक है? अपनी पोइम स्टार्ट करो, बस अपना टीम नंबर ते अपना नाम दस के. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी भारती, भारती कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बस मुझे ना एक बात बोलनी थी. जो एजुकेशन का टॉपिक है आप प्लीज उस और पंजाबी में दे दो. श्योर श्योर भारती, वो आ जाएगा आपको, आपके ग्रुप्स में आ जाएगा. जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी वैसे ही आ जाएगा. हाँ जी बेटा. शालिनी, आर यू देयर? Meanwhile, I would like to invite, who is this? Dilpreet Kaur. Dilpreet from team number 6. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, Dilpreet, you are audible, beta. नमस्कार. इस कविता में कवि ने रिश्ते नाते हुए पराए जो कल तक थे अपने, उंगली पकड़ पांव चलाया घर के अंगनारे में. उंगली पकड़ पांव चलाया घर के अंगनारे में, यौवन लेकर सन्मुख आया वह बंटवारे में. उठी बात बंटवारे की तो, उठी बात बंटवारे की तो, सब कुछ लगा था बटने. टूटी माला बिखरे मन के, झुलस गए सब सपने. रिश्तों की ये बूढ़ी आंखें, रिश्तों की अब बूढ़ी आंखें देख देख पथराई. आशाओं के महल की सांसें चलने से घबराई. कल का नन्हा हाथ, कल का नन्हा हाथ गाल पर लगा कच्चा कसने. टूटी माला बिखरे मन के, झुलस गए सब सपने. दीवारों पर रिश्ते चिपके, रिश्तों पर दीवारें. दीवारों पर रिश्ते चिपके, रिश्तों पर दीवारें. घर आंगन सब हुए पराए, किसको आज पुकारें. रिश्तों की मैली सी चादर, रिश्तों की मैली सी चादर चली सरक कर हटने. टूटी माला बिखरे मन के, झुलस गए सब सपने. टूटी माला बिखरे मन के, झुलस गए सब सपने. आज आप किसी को भी पूछ के देख लीजिए, हर घर का यही हाल है. कहीं बंटवारे हो चुके हैं तो कहीं होने के कगार पर हैं. इसलिए कवि फरमाते हैं कि हर घर में बस यही समस्या, हर घर में बस यही समस्या चौखट पार खड़ी है. जिसको छूकर देखो रत्नम विपदा बड़ी है. हर रिश्ते में पड़ी दरारें, हर रिश्ते में पड़ी दरारें, लगा कलेजा फटने. टूटी माला बिखरे मन के, झुलस गए सब सपने, झुलस गए सब सपने. धन्यवाद. हेलो मैम, may I audible? हेलो मैम, may I हाँ जी audible? दिलप्रीत, थैंक यू बेटा. शालिनी. यस मैम. हाँ जी बेटा, आपकी आवाज कम है, थोड़ा दोबारा बोलो. हेलो जी करिए बेटा स्टार्ट. ओके.
नमस्कार, मैं शालिनी टीम 6 की प्रतिभागी डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की एक विद्यार्थन और मैं आज की इस कविता उच्चारण प्रतियोगिता में अशोक चक्रधर साहब जी की लिखी हुई कविता घर बनता है घर वालों से उच्चारित करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर रिश्तों से बनता है। जिस घर के लोगों के रिश्ते मधुर होते हैं वो घर घर ना होकर स्वर्ग बन जाता है। प्रस्तुत है मेरी कविता। दरवाजों से ना दीवालों से, दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। अच्छा कोई मकान बनाएगा, अच्छा कोई मकान बनाएगा, पैसा भी खूब लगाएगा, पर रहने को नहीं आएगा तो घर उसका भर जाएगा सारा मकड़ी के जालों से। दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। जब घर में कोई न होता है, जब घर में कोई न होता है, दादी है ना पोता है, घर अपने नैन भिगोता है, भीतर ही भीतर रोता है। घर हंसता बाल गोपालों से, घर हंसता बाल गोपालों से, दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। तुम रहे भी मगर लड़ाई हो, तुम रहे भी मगर लड़ाई हो, भाई का दुश्मन भाई हो, नंदी से तनी भुजाई हो, ऐसे में तो राम दुहाई हो। घर घिरा रहे सवालों से, दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। हाजरीन, जरा गौर फरमाइएगा कि कितनी खूबसूरत पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि कैसे हम प्रेम के भाव से रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। जरा सुनिएगा। गर प्रेम का ईंट और गारा हो, गर प्रेम का ईंट और गारा हो, हर नींव में भाईचारा हो, कंधों का छतों को सहारा हो, दिल खिड़की में उजियारा हो। घर गिरे नहीं भूचालों से, घर गिरे नहीं भूचालों से, दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू शालिनी, बहुत बढ़िया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੋਇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੋਮ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 7। Am I visible and audible? Yes, Rishika. A very happy afternoon to everyone. My name is Rishika Sharma. I am from Jain College of Education, Ludhiana, and I'll be representing team number 7. The poem which I am going to recite is a very profound works in literature of African American history. That is Human Family by Maya Angelou. I note the obvious differences in human family. Some of us are serious, while some thrive on comedy. Some declare their lives are lived as true profundity, while others declare that they lived the real reality. The variety of our skin tones can confuse, bemuse, and delight. Brown and pink, beige and purple, tan, blue and white. I've sailed upon the 7 seas and stopped in every land. I've seen the 7 wonders of the world and not yet one common. I know 10,000 women named Jane and Mary Jane, but I have not seen any two who were actually the same. Mirror twins are different, although their features jive, and lovers think through different thoughts while lying side by side. We love and lose in China. We weep on England's moors, and laugh and mourn in Guinea, and thrive on Spanish shores. We seek success in Finland, and are born and die in Maine. In minor ways we differ, but in major we are the same. I note the obvious differences between each sort and type, but we are more alike, my friends, than we are unalike. We are more alike, my friends, than we are unalike. We are more alike, my friends, than we are unalike. Thank you. Thank you, Rishika. After Rishika, Akanksha will recite her poem.
Akanksha from team number 7. After that, Anchal will be ready. हाँ जी आकांक्षा शुरू कीजिए बेटा। बेटा थोड़ी आवाज बहुत लो है आकांक्षा। आकांक्षा तब तक आप सेट कीजिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। आंचल ठाकुर। Yes, ma'am. हाँ जी आंचल आप शुरू कीजिए। Good afternoon to all of you. My name is Anchal Thakur from GGTSD College, Haryana, team number 7. मेरी कविता का नाम दोस्ती। ये कविता श्री रविचंद्रन के द्वारा लिखी गई है। कुछ अच्छे गीत पुराने थे, कुछ सच्चे मीत पुराने थे। दोस्त हो तो फिक्र नहीं, वो दिन भी क्या जमाने थे। जीवन के पेड़ की उस डाली पे पंछी गाते खुशी की तराने थे। उनमें ऊंच नीच का भेद नहीं था, सब यारी में दीवाने थे। मुसीबत में सही गलत ना देखें, सबको साथी के मतलब समझाने थे। मतलब से कोई दोस्त नहीं था, बिन मतलब सब दोस्त बनाने थे। धन्यवाद। थैंक यू आंचल। हाँ जी आकांक्षा आर यू रेडी? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके। Audible. हाँ जी शुरू कीजिए। सब लोग मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। सब संग स्वे रचित कविता प्रस्तुत ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਚਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਚਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਲੀਕੋ ਲੀਕ ਹੋ। ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹਾਸੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਅੱਜ ਲੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ। हेलो हाँ जी आकांक्षा थैंक यू बेटा। नेक्स्ट फ्रॉम टीम नंबर 8 दिव्यांशी, आफ्टर दैट नवजोत। हाँ जी दिव्यांशी। फ्रॉम टीम नंबर 8 दिव्यांशी एंड टीम नंबर 8 नवजोत। तो दोनों में से कौन अभी है रेडी है? मैम नवजोत is here. ओके ओके स्टार्ट बेटा। God could not be everywhere on earth, so he created a mother to give us birth. Honorable members of the jury and everyone present in this camp, a very good afternoon to all. This is Navjot Kaur from GTB Khalsa College for Women Dasua from Team 8. Today, I would like to recite a very heart-touching poem, More Than a Mother by Kerry Kashmir. So, here I go. When God set world in place, when he hung the stars up in space, when he made the land and the sea, then he made you and me. He sat back and saw all that was good. He saw things to be as they should. Just one more blessing he had in store. He created a mother to bless us more. He knew
A mother would have a special place to shine his reflection on her child's face. A mother would walk the extra mile just to see her children smile. She will work her fingers to bones to make a house into a home. A mother is there to teach and guide. She will stay right by your side. She will stay right by your side. A mother is there through your pain and strife. She will stay constant in your life. She will stay constant in your life. A mother is there to teach and guide. A mother is there to teach and guide. She will stay right by your side. She will be there through your pain and strife. She will stay constant in your life. A mother will lend a helping hand. A mother will lend a helping hand until you have the strength to stand. Until you have the strength to stand. She will pick you up when you are down. She will pick you up when you are down. When you need a friend, she will stick around. A mother is one who listens well, will keep her word, will never tell. A mother never pokes or pries, but stands quietly by your side, giving you the strength you need, encouraging you to succeed. A mother is one who can be strong. A mother is one who can be strong when you need someone to lean on. You are more than a mother to me. You are more than a mother to me. A reflection of God in you I see. A reflection of God in you I see. Thank you. Thank you, Beta. Navjot, thank you. One student is left. Is she there? Divyanshi? Yes, ma'am. Okay. Start, Ma'am, Beta. am I audible and visible? Yes, yes. नमस्ते सबको, मैं दिवांशी गुप्ता टीम नंबर 8 से आपके सामने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी कविता पेश करने जा रही हूँ। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है ये जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी यूं आम हो जाती है। एक सवेरा हुआ करता था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही यूं शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ मगर फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता तो हूँ कि ये दुनिया बदल दूं, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं तो हम दिलों को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर करती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, कभी खरीदा नहीं जाता। पैसे से
तो कभी खरीदा नहीं जाता और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू दिव्याक्षी, थैंक यू बेटा। So the competition of poem recitation is over now. I have an announcement for you, beta. The topic of allocation is, please note down. Topic for allocation is empowered youth as a harbinger of change in nation. Empowered youth as a harbinger of change in nation. Topic will also be sent into your groups. Okay. हाँ जी मोनिका मैम, बताइए अभी क्या करना है। हिंदी और पंजाबी में भी अनाउंस कर दीजिए आप, हिंदी और पंजाबी में भी अनाउंस कर दीजिए। अच्छा जी, मैसेज देखिए, मैसेज जी। हिंदी में है बेटा, सशक्त युवा राष्ट्र में परिवर्तन के अग्रदूत। सशक्त युवा राष्ट्र में परिवर्तन के अग्रदूत ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਸਸ਼ਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स एलोकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? यस मैम। क्योंकि आप लोगों को बेटा 5 बजे से पहले अपने 4 o'clock जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं टीम इंचार्जेस की तरफ से, अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपनी एंट्रीज उनको भेज देनी है एज सुन एज पॉसिबल।